Assalamu alaikum everyone. Hope everyone is doing good. So I formally welcome you all to the second international conference on current landscape of media diplomacy. So today we are here opening this second international conference, day one. So as you all know that it is going to be a 3-day online international conference where we will be talking on different topics of media diplomacy, technological evolution, and how technology is playing a role for media diplomacy. So we will shortly begin formally with the name of Almighty Allah. So we are just waiting for a couple of minutes to more guests to join us and also our live stream to go smooth. So the live stream link will be shared with all of our esteemed participants, and all our esteemed panelists and speakers will join us on Zoom link. So if anyone want to ask any question, he or she can also join us on Zoom, and you can also post your questions on YouTube Live, from where our admin will read those questions and ask to our esteemed panelists. So we are already joined by one of our esteemed panelists, Mr. 𝐂𝐮𝐫𝐽𝐿. Sir, Assalamu alaikum. I can see you here. So kindly let me know if I am clearly audible to you. And I guess this is a good time to test your mic as well. So if you can kindly unmute yourself and do this initial test. Ji, बहुत शुक्रिया. Thank you very much. And I can hear you well. Thank you very Awesome. much for inviting me. Awesome. Thank you, sir. Thank you for joining us in this second international conference on current landscape of media diplomacy. So I'll hand over to our host of the evening, Ms. Arfa Arbi, Media Manager at 𝐶𝐚 Technologies Private Limited. So she can formally begin with the proceedings of this conference. Over to Ms. Arbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all our respected speakers, honorable panelists, and distinguished guests joining us from across the globe. Here is your host, Arfa, Media Manager at 𝐶𝐚 Technologies. It is truly a privilege for me to serve as your host for today's prestigious event, the second international online conference on the current landscape of media diplomacy. On behalf of the entire team at 𝐶𝐚 Technologies, I extend a heartfelt welcome to all of you. Your presence here today reflects your commitment to exploring the critical intersection of media and diplomacy. We are thrilled to have such a distinguished group of speakers, panelists, and participants with us. Together, we aim to foster meaningful discussions, share valuable insights, and explore innovative perspective on this vital topic. Now, allow me to brief introduce 𝐶𝐚 Technologies, the driving force behind this event. As a forward-thinking organization, 𝐶𝐚 Technologies is committed to advancing knowledge, fostering dialogue, and promoting technological innovation in media and beyond. With a vision to create platforms for intellectual exchange, we have been actively contributing to media education, development, and information sharing. This conference is yet another step toward that mission, bringing together experts, practitioners, and thinkers from diverse fields. We hope this conference becomes a space for inspiration, critical thinking, and collaboration. I invite you all to actively participate, engage with our speakers, and contribute to this evolving discourse on media diplomacy. To begin this conference with blessings and guidance, let us start in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم. Jazakallah. To honor our homeland and the values we hold, we will now play the national anthem of Pakistan. I invite everyone to join in this tribute. Thank you, everyone. Let's a quick recap of the first international online conference on media tech. That was a landmark event that brought together media professionals, industry experts, and thought leaders from around the world. Spanning 2 days of insightful discussions, the conference focused on key themes such as emerging trends in media technology, the role of big data in media,
and the future of conventional media in the digital era. Esteemed speakers and panelists share their expertise on the transformative impact of AI, data analytics, and digital innovation on TV, radio, and print media. Through keynote speeches, panel discussions, and interactive question-answer sessions, participants explored opportunities and challenges posed by technological advancements. The event emphasized the need for media organizations to embrace change, adopt emerging technologies, and leverage big data to stay relevant in a rapidly evolving industry. The conference concluded with a re, uh, resounding message of adaptation, collaboration, and innovation as the key drivers of the media's future landscape. Now we are move forward to the theme of day one of our conference. This is media is a diplomatic tool in global relations. This theme highlights the growing influence of the media in shaping public opinion, fostering cross-cultural understanding, and supporting diplomatic efforts between nations. Through this lens, we will explore how the media serves as a bridge for dialogue, space building, and global collaboration. Under this theme, we have two engaging panel discussions lined up for today, featuring thought-provoking conversation with our esteemed speakers and experts. Now I'm truly excited to move forward to our first panel discussion titled Media's Role in International Relations. This session will explore how the media influences diplomatic narratives and shapes international relations. We are honored to have this discussion moderated by none other than the CEO of 𝐶𝐻 Technologies, Mr. Hamid Saeed. Get ready for an engaging and insightful conversation led by our expert panelists. Mr. Hamid, the virtual floor is yours. Thank you, Ms. RB, for the generous introduction. Now it is time to start with the first panel discussion of day one of the second international conference on current landscape of media diplomacy. So in this panel, we are joined by our esteemed panelists who are subject matter experts. So we have a good number of panelists in this panel discussion who will, some of them have already joined and some of them will shortly join us for this engaging discussion. So I'll start with the introduction of a panelist I can already see on my Zoom screen. So we have with us Professor 𝐹tikhar Rasool Sheikh, who is a senior media person and have over decades of experience with broadcasting organizations like Radio Pakistan. So we are really pleased to have Professor 𝐹tikhar Rasool Sheikh with us in 𝐶𝐻 Technologies media office today. We have with us Mr. Umair Khan, Muhammad Umair Khan, who is Head of Public Relations at Sialkot International Airport. We have with us Mr. Sajjad Haider, CEO, Humans Meta Tech. We have Muhammad Yusuf Sahab with us, who is Executive Director, Techniforge, TIPEs, and Dr. Hasnain Makhdoom, who is President of famous Federation of Worldwide Collaborators. Also, we have more esteemed panelists representing youth and academia with us. We have guests from other panels, from the upcoming panels with us. So I can see Mr. Hamidullah in the panel and Ms. Nozebele Sogoni in the panel. So we'll also be looking forward to listen to their questions from our esteemed panelists like Muhammad Yusuf Saab and the other esteemed panelists. So I'll quickly start with the first question of this panel. And I'll firstly go to Muhammad Yusuf Saab because he do have another commitment right after this meeting. So, sir, my first question will be from you. And the question is pretty, general and pretty simple. So my question is to you is that how media as a diplomatic tool can play its role and how media can serve as a soft power tool to influence international relations and what examples demonstrate its effectiveness.
So we are really looking forward to hear from you. So it is a bilingual conference. If you want to answer it in any international language, or you want to answer it in the national language of Pakistan, choice is yours. So over to you, Muhammad Yusuf Saab. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, dear Hamid Saeed. I'm really honored and glad to have you. First of all, yes, you have a very good question. Actually, what we are seeing in the media industry is a strategic shift, right? What you assume is you can say that we are facing the paradigm shift, right? We have the expert in this panel who will be obviously endorsing me in this uh, conversation, that media actually has changed its landscape and converging from traditional to you can say diversification to technology, IT technologies, right? So the basic role of the media is to create a bridge, right, to connect. So as you assume that the media is influencing and creating a bridge between the nations around the world, right? As a soft power tool, you assume that like we can we just have experienced this in the role of the media and the social media as well. In the selection of Donald Trump selection recently, the United States president, that Twitter, newly named X, has impacted a lot um, in the scenario of digital landscape and I must say that yeah, we are facing strategic shift in the media industry from traditional to the technological advancement. Awesome. So yeah, so you are absolutely right. And whenever it comes to diplomacy, so we have been listening to different opinions about diplomacy. So we have seen different diplomatic tools, like Yeah, in Pakistan, the mango diplomacy is very famous. yeah, We used to send mangoes to different neighboring countries, yeah. and different countries we have ties with, over friendly countries, over Muslim countries, right? So how you see media as a tool that how do you see it, that is it gonna replace the role of those hard diplomatic tools, or it is just gonna assist them with the technological interventions? Hello, sir. Can you repeat your question? I Yeah, so just yeah, faced an please. interruption. Sure, Yeah. sure, sure. Okay. So my question is that we have seen hard diplomatic tools, like Pakistan used to Yeah. do, mango diplomacy, and then we have cultural diplomacy, Mm. our artists used to Yeah. go Yeah. to neighboring countries and Muslim countries. Mm. Mm. But Mhm. is technology and media diplomacy gonna totally replace all those things, or it is just gonna assist the existing infrastructure? Uh, I can mention here is, yeah, at the moment both of the scenarios are executing by the both ways, right? Either it is the traditional media or the digital media, right? And obviously the cultural shift making it happen different from place to place, right? Like for example, we talk from the first world countries, yeah, the technological advancements are more faster than in our country. Rather, we are adopting the change, right? We in this scenario, we are obviously we have influence from the BBC, CNN, and Voice of America, and all those. Yeah, you name the big Al Jazeera, right? So apart from that traditional broadcasting channels, we are facing non-traditional, you can say, technologies like Twitter and Facebook.
and some other you can say the technologies which are impacting our lives, and they are getting involved in our daily day-to-day routine lives, right? And we our approach towards the media is diversing from the traditional to technological. Yeah. This is the answer I should mention over it. Yeah. Yeah, absolutely right. And I would also like to listen from other panelists about the same question. So I can see Irfan Khan with us. Irfan Khan Baloch, can you hear us? And I would like to have your opinion on this matter, that how do you see that these soft power tools, these soft diplomatic tools of especially media diplomacy, are they totally gonna change the landscape, or they are just here to assist the existing infrastructure? Hello, Yes, Irfan, please go ahead. am I audible, brother? Yes, you are. Uh, Thank you so much for such an honor. It's really pleasure for me to among such a the expert when from our industry as well. I really wanted. Can you please repeat the question? Yeah, so the question is about the ongoing discussion that we have multiple soft power tools like diplomatic tools where media is playing roles. So how do you see these tools? Are they gonna totally replace the existing landscape, or they are just here to assist the existing infrastructure, like the existing mango diplomacy and existing cultural diplomacy that we are doing? Thank you so much, Shahrukh. It's really honor for me over here. And as I already heard, Muhammad Yusuf, one of my, the gentleman the panelist as well, he put a really positive thing, especially about the how the current, we can say, the emerging social media and all that changing the landscape in the future as well, especially in the diplomacy. So being a student of international politics and international relation, I just wanted to share my point of view over here. As you already mentioned, there are, the diplomacies develop as we are living in our society, like you mentioned, the mango diplomacy, then on the other hand, the sports diplomacy. You also mentioned about the artist diplomacy where, there's some, concerts and music and, the film industry is going on. The thing is that I really wanted to, just explain a little bit that how diplomacy, change with the passage of time. Because right now we are living in digital era, and we can say it's a social media, the age of social media. So definitely, it's not going to change and replace the traditional diplomacy, but I'm audible. Yes, Okay. Irfan, you are audible. Okay, thank you, thank you. But the one thing I really wanted to, mention, the diplomacy always develop and grow with the passage of time. Right now, we are living in digital era, so definitely it can add the value, and it already adding the value. And one of our panelists, Mohammed Yusuf, have mentioned, the election, especially in the USA. It's happening everywhere around the world, because I would talk about here in Pakistan. So there are multiple reasons and of the the growth and the development of our ex-Prime Minister Mr. Imran Khan. But the one of the major reason is the wise use of this social media, especially in the political landscape. So the same thing, if we going to expand in the international landscape, so definitely we are living in the globalized world, where we can see even the businesses is going on the social media platform. If we talk about the political perspective is going on the on this social media platform. If we talk about the social entrepreneurship, so with this age is this in social media, the individual is growing on. Hello. Yes, Irfan, please continue. We can hear you. Thank you. And
the emergence of this social media, especially in the diplomacy and especially the international, the landscape and this globalized world, it helped a lot, especially in the individual life, as we are seeing there are, the thousands of the people who are just earning from this social media platform. On the other hand, if we talk about the political landscape in the diplomatic relation, so definitely, as our one of the colleague also mentioned, Mohammed Yusuf Saab, that the Twitter X, and it's played a pivotal role in the U.S. election. It played a pivotal role in Indian election, one of the the biggest democracy in the world. On the other hand, if we talk about the Russian election, where the President Putin became the longest president there. So definitely, it played a pivotal role to change this landscape, but not replaced it anymore. So yes, this would be from my side, my brother. Yeah, I totally agree with what Irfan had said, and I'll quickly go back to Mr. Muhammad Yusuf about my next question. That, sir, how do you see that there are different global crises such as conflicts and also natural disasters? So while using social media now, we see that if some national disaster or like some epidemic or some pandemic is there, so Facebook and other social media platforms, they show us a caution, a sign where they ask, are you safe? So how these kind of media tools and social media tools are playing a pivotal role in media diplomacy? Like myself sitting in Pakistan, I know who is safe in Afghanistan. I know who is not safe in India or any other neighboring countries. So how these kind of social media tools, especially not media tools in general, social media tools, how they are playing a pivotal role in media diplomacy? So please kindly unmute your mic. We can't hear you. Thank you. Thank you for your acknowledgement, your question. That's really a great question again. Yeah. I should mention over here is that the social media, yeah, the social media is making drastic changes in our routine life, in our as far as global era is concerned, as well as the local era is concerned, right? Yes, the proximity and the local concern make us more impact. Yeah, that's right. But at the other hand, we are connected globally in this era. So yeah, the global landscape of diversification and impacting through the world, right? So the case you just mentioned that the happening in Afghanistan makes us, in some context, some you can mention that differences in our life, right? Right. So the role of social media, yeah, the role of social media in this scenario make you can mention that. Well, obviously, we are concerned over it, and we are thinking of it. We are learning from it, and if some happens in Afghanistan or in Asian region, we are over concerned on it. The case is, yeah, in recent, you mentioned that in Iran, yeah, in Iran, any happening is concerned. U.S. Is more rather concerned any development or any strategic shift that converts the any exploitation or any, you assume it as an I mean to say that social media is a far more concerned on it. So that's from my side. Yeah, absolutely right, sir. And this leads me towards my next question. And I think Farheen Sheikh has joined us. So Farheen has recently got back from the holy pilgrimage Umrah. So she observed the whole kind of diplomatic ties that got developed during that holy journey. So Farheen, I would like to ask you that how do you think that these traditional
journeys and these traditional kind of diplomatic tools and diplomatic ties are replaced by the current social media and the media in general. Because when you return back from that holy journey, you are still connected to those people. That was not the case earlier. In early days, when you come back from a journey, so it's over. If you want to meet those people again, you have to go back to that particular place again. But now, the era we are living in, we can stay connected with people of any place where we just visited once in a lifetime. So how do you see that these tools are gonna help us in retaining those hard-earned relations? So over to Farheen. Hello, Assalamu alaikum. How are you? Alhamdulillah. क्वेश्चन जो आपका प्लीज दोबारा से रिमाइंड कीजिए, कनेक्शन इशू आ रहा है। जी फरहीन, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले इस तरह से होता था कि हम किसी जगह पे जाते थे, कोई सफ़र करते थे, तो हमें वापसी पे उन रिलेशंस को रिटेन रखने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती थी। उन लोगों से दोबारा मिलना पड़ता था या टेलीफोनिक रब्ता रखना तो काफ़ी मुश्किल होता था। तो अब इस सोशल मीडिया के दौर में और इस मीडिया के दौर में आप इस चीज़ को किस तरह से देखती हैं कि आप एक जगह से विजिट करके आ चुकी हैं लेकिन स्टिल आप उस जगह से कनेक्टेड रह सकते हैं? तो इस चीज़ ने किस तरह से असर डाला है? मुस्बत असर है, मनफी असर है? हाउ डू यू सी इट? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड आप सबने जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन किया, और अभी मैंने सुना भी जो नेक्स्ट पिछले थे। अच्छा, उसमें ऐसा ये है कि बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया, और इसके बारे में जो है मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बता सकती हूँ कि बिल्कुल मैंने जो अभी अरब अमारात के टूर्स किए हैं 2 ना, दुबई का और इसके अलावा सऊदी, जैसे कि अभी उम्रा परफॉर्म करके आई। मैंने डिफरेंट देखी, ज़ाहिर सी बात है जो सऊदीया होता है उसमें डिफरेंट दुनिया आपको नज़र आती है। बहुत से लोग आपको इस तरह से नज़र आते हैं जो बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा। देखिए, हम एक स्पेस पे इतने सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन में होते हैं और बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत सी यानी कि मैंने कनेक्शंस देखे, वहाँ बिज़नेस प्लान्स देखे, कुछ सऊदीया के अंदर के देखें जो हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के ऊपर भी हम बड़े अच्छे काम कर सकते हैं अगर हम घर बैठे बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि मीन्स के हम अगर कनेक्शंस में रहें लोगों के साथ, जैसे कि अब देखिए आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी लाइफ जा रही है, इसमें बहुत से लोग अभी आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, आपको पूरी प्रॉपर चीज़ों से बताएँगे। तो यही होता है, एफर्ट स्ट्रगल करनी पड़ती है हर चीज़ के अंदर, और इसमें ये है कि आप जो है स्ट्रगल करते रहें, और ऑनलाइन सिस्टम प्रॉपर जो है आप अपने आप को जो है प्लेटफ़ॉर्म अच्छा ऐसा रखें, जैसे फ़ेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर अपना एक ऑनलाइन काम स्टार्ट करें। कोई भी एक छोटा-सा प्लेस भी स्टार्ट करें तो आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं मीन्स के सोशल मीडिया के ऊपर। एब्सोल्युटली राइट फरहीन, आपने बिल्कुल अपना जो आपका पर्सपेक्टिव था वो आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। और इसी के साथ ही मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे बड़े ही स्टीम पैनलिस्ट हैं मोहम्मद उमैर खान साहब, जो कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो पब्लिक रिलेशंस हैं उसको मैनेज कर रहे हैं। और सर ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, अभी भी सर एक डेलीगेशन के साथ मीटिंग में हैं, लेकिन सो नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो सर, अब आप एक एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आपका तो ये डिप्लोमेटिक टाइज और इन तमाम चीज़ों से आई कैन से कि यू हैव अ डेली काइंड ऑफ एनकाउंटर विद दीज काइंड ऑफ एंडेवर्स। सो पाकिस्तान से जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा जो डायस्पोरा है या उसके अलावा पाकिस्तान जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये लोग किस तरह से डिप्लोमेसी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं? और क्या इसके साथ ही जब ये लोग बैरून मुल्क जाते हैं तो क्या पाकिस्तानी मीडिया की आवाज़ भी इनके साथ बैरून मुल्क जाती है? सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू एज एन एक्सपर्ट व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी सूरत में, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जहां तक रही आपने बताया कि पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल आवाज बनती है, जैसे आपने देखा कि सीरिया में कुछ पाकिस्तानी स्ट्रैंडेड थे, फंसे हुए थे, कुछ 300 के करीब थे। उनको जो है कि एक कार्गो जहाज है उसने उनको रेस्क्यू किया, वो प्राइवेटली चार्टर था, उसके बाद उनको पाकिस्तान लाया गया। तो वो मीडिया की आवाज से ही बेसिकली जो हुकाम बाला है वहां तक आवाज गई, और वहां से तमाम जो अरेंजमेंट्स है वो की गई। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताया चलूं कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, आजकल जो सबसे ज्यादा इशू पाकिस्तानियों को फेस करना पड़ रहा है वो है डिफेमेशन का। वो है कि जो बैन ऑन द वीजाज हैं बेस्ड ऑन हाउ पाकिस्तानीज आर यूजिंग द सोशल मीडिया एंड द मीडिया फॉर देयर ओन पर्पस।
वो एक तो ये है कि पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं, पर बाहर के जो कवानीन हैं उनके खिलाफ जो है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, वेयर एज वी शुड हैव बीन न्यूट्रल। हम कहते हैं डू इन रोम व्हाट रोमन्स डू। हमें वहाँ के तौर तरीके अपनाने चाहिए, वहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशन उनको अपनाना चाहिए, ना कि सिर्फ जाके आप अपनी ज़ात को और अपने मुताबिक जो है मीडिया को एंगेज करें। हमारा जो प्राइमरीली एयरपोर्ट पे जो काम है वो एक तो वन ऑफ द मेजर जो जॉब्स ऑब्जेक्टिव वो तो सेंसिटाइज पब्लिक के जो लोग एयरपोर्ट आते हैं उनके पास तमाम तर चीजें हों, कवायद हों, इवन पीपल आर नॉट अवेयर। हालांकि सब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और मीडिया पे अवेलेबल हैं और इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिनको या तो किसी एजेंट के हाथ चढ़ जाते हैं बेचारे, और या फिर वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं जो कि फेक होते हैं या फिर वो फटे हुए होते हैं, फिर उस पर ट्रैवल करना चाहते हैं, फिर वो सोशल मीडिया को यूज करके जो है अदारे की बदनामी या किसी भी अदारे, मैं नहीं समझ सकता सिर्फ एयरपोर्ट है बल्कि तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे मस्ट हैव बीन फेसिंग ऑल सॉर्ट ऑफ दीस इश्यूज एज वेल, कि वो उसको यूज करके प्रोपेगेट करते हैं। हाउएवर हमारा तो लोगों के साथ जो डे टू डे इंटरेक्शन है वो यही होता है कि हम लोगों को सेंसिटाइज करें, उनको अवेयर करें, फिर उनको फैसिलिटेट करें। और बीइंग अ पब्लिक रिलेशन मैनेजर, मीडिया मैनेजर, हमारा काम ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल और उसकी इमेज बिल्डिंग को बेहतर से बेहतर बनाए, रेपुटेशन दें, और वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव। जो भी मीडिया यूजर्स हैं, चाहे वो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स, दे शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स इट। और आपको कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन की डिसेमिनेशन करनी चाहिए। नॉट एवरीथिंग इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द पब्लिक। उतनी ही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जितनी लोग अब्सॉर्ब कर सकें, जितनी लोग समझ सकें। क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उल्टा नेगेटिव उसका इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो एक तो खैर आपका एक जो कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने पे हम आपको जो मुबारकबाद भी पेश करते हैं, साथ साथ इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, गुड इनिशिएटिव टू लॉन्च, एंड ताकि लोग जो है सेंसिटाइज हो सके, लोगों को बताया जा सके, और हमारी आवाज जो है मुख्तलिफ जो भी मीडिया कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स, आई एम श्योर कि बहुत सारे इसमें हैं, वो भी इसको एंडोर्स करेंगे और यही बात मोरलेस करेंगे कि हमें पॉजिटिव यूज करना चाहिए, ना कि नेगेटिव यूज उसका इस्तेमाल करें। पॉजिटिविटी को हम जितना मैक्सिमम डिसेमिनेट करें करें, और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मैं बारहा कहता हूँ कि देनी चाहिए। हर इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, ना उनको देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर अ वेरी comprehensive रिस्पॉन्स। और आपकी बात में एक बस छोटा सा क्विक क्वेश्चन मेरे जहन में एक और आ रहा है कि आपने मेंशन किया कि आप एज अ पीआर पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉजिटिव इमेज है उसको एनहांस कर रहे होते हैं। तो क्या हम पाकिस्तान को भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं कि ये पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम तमाम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉजिटिव इमेज आगे प्रेजेंट करें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली ये कि इंडिविजुअल लेवल पे रिकग्निशन होती है। जैसे अरशद नदीम आपने देखा, अरशद नदीम ने इंडिविजुअल लेवल पे जाके एक गोल्ड मेडल लिया और एक ओलंपिक मेडल लिया और कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए, इंडिविजुअल एफर्ट्स के साथ कलेक्टिव एफर्ट्स होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान को एज ऑर्गेनाइजेशन देखें तो हम पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, तमाम लोग घर अपने हल्के अहबाब में, हल्के अपने सफेयर में जो है वो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा हो रहा है, कलेक्टिव एफर्ट्स कम है। जब कलेक्टिव एफर्ट ज्यादा होंगी तब हमें दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीबॉडी विल बी कॉपिंग अस। हर कोई हमें कॉपी कर रहा होगा, ना कि हम किसी को कॉपी करें या किसी से इंप्रेस हो। लोग पाकिस्तान से इंप्रेस होने चाहिए बजाय कि पाकिस्तानियों को लोगों से इंप्रेस होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि लास्ट इन 1 ईयर अराउंड 1 मिलियन पाकिस्तानी लेफ्ट पाकिस्तान। तो वो सारा कुछ अनसर्टेनिटी के ऊपर। आप जितना मीडिया पे देखते हैं, जितना नेगेटिव कंटेंट है, जितना इररेलेवेंट कंटेंट है, जितना कि बेहुदा कंटेंट है, हम वो देखते हैं। हालांकि कलेक्टिव एफर्ट जब हो तो पॉजिटिविटी को क्रिएट करना चाहिए। पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स हैं, माइलस्टोन्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो लैंडस्केप्स हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके टूरिज्म को, बहुत सारी एलिमेंट्स हैं। तो हम समझते हैं कि इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा कलेक्टिव एफर्ट पे काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट सर। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम तमाम अहबाब अभी जैसे इस अम्ब्रेला के अंडर इकट्ठे हैं, अगर इसी तरह से हम लोग मिलकर कुछ कलेक्टिव एफर्ट्स करें तो आई कैन सी एक ब्राइट इमेज जो है हम ना सिर्फ शेप कर सकते हैं बल्कि उसको आगे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो इसी हवाले से हमारे पास प्राइवेट सेक्टर जो है पाकिस्तान का, खासतौर पर सॉफ्टवेयर सेक्टर, उससे सज्जाद हैदर वड़ाई साहब मौजूद हैं जो कि सीईओ हैं ह्यूमन्स मेटा टेक के। मोहम्मद यूसुफ साहब अभी तक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टेक्नी फोर्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप दोनों से पहले मोहम्मद यूसुफ साहब से और उसके बाद सज्जाद हैदर साहब से मेरा एक कलेक्टिव सवाल होगा कि जैसे सर उमैर ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये कलेक्टिव एफर्ट है। तो इस कलेक्टिव एफर्ट में एज एन आईटी इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, एज अ बूमिंग इंडस्ट्री जो कि मुल्क में ना सिर्फ ज़र मुबादला ला रही है बल्कि मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज भी आगे प्रेजेंट कर रही है,
तो इसमें एज अ प्राइवेट सेक्टर हम लोग फर्दर क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं कि हम फर्दर जो पाकिस्तान का एक और पॉजिटिव इमेज है उसको आगे पहुंचा सकें। सो मोहम्मद यूसुफ साहब, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और इसके फ़ौरन बाद सज्जाद अदर साहब, आप इस हवाले से अपनी राय का इजहार कीजिएगा। थैंक यू हमसे भाई, आपने फिर एक अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली आईटी इंडस्ट्री, इट्स मेकिंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, राइट। जिस तरह से हम अभी फेस करें कुछ चैलेंजेस, अ पार्ट ऑफ इट हमारा जो आईटी सेक्टर है ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे पोटेंशियल इस तरह से है कि अगर हम उन्हें थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, इन ऑर्डर टू गेट देम ट्रेनिंग, इन ऑर्डर टू गेट देम इडोबी, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। इडोबी में अगर हम उन्हें फैसिलिटेट करें तो यस वी कैन हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द यू कैन से आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर से जो चीज़ें हम मोस्ट लाइकली अभी हम फेस कर रहे हैं, इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन, राइट, इंटरनेट की आउटेज हम फेस कर रहे हैं, अगर ये चैलेंजेस हमारे थोड़े से सॉल्व आउट हो जाएं आईटी इंडस्ट्री के, तो यस वी हैव ए यू कैन से एम्पल, I mentioned that we have an ample potential, we can serve the world, ठीक है। और जो पूरी मतलब आईटी इंडस्ट्री में हम एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट और शिफ्ट ला सकते हैं, और ऑलरेडी हम एक बहुत सारा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। रादर वी नीड सम, फर्स्ट ऑफ ऑल इडोबी एंड फैसिलिटेशन इंटरनेट नेटवर्क। ओवर टू सजाद अली साहब। थैंक यू हामिद फॉर ब्रिंगिंग ऑल अस टुगेदर। हमें सबको मतलब इकट्ठा करने का शुक्रिया, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी जहाँ पे हम बोल पा रहे हैं। तो हामिद, मैं चाहूँगा आप एक दफ़ा प्लीज़ क्वेश्चन को ज़रा दोबारा अगर रिफ्रेश कर सकें तो। जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर है, खासतौर पे आईटी इंडस्ट्री है, जो कि रेवेन्यू तो माशाल्लाह मुल्क में काफ़ी ला रही है, लेकिन मुल्क का एक पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज एज अ डिप्लोमेटिक टूल हम किस तरह से फर्दर इन्हांस कर सकते हैं? श्योर। मेरा इस बारे में पर्सपेक्टिव जो है वो बड़ा सिंपल है। देखें, आईटी इंडस्ट्री पहले ही जो है वो अपने, जैसे कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने बताया, अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो है वो एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी से कर रही है। लेकिन आईटी इंडस्ट्री हमारी जो है वो मज़ीद भी इसके अंदर अपना रोल अदा कर सकती है। मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा। मैं यूजुअली, आपको पता है, हम लोग सोशल मीडिया को काफ़ी कंज्यूम करते हैं। टेक का पार्ट होने की वजह से भी हमारी जो है वो थोड़ी सी ज़रा एफिलिएशन और ज़्यादा इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे फूड वीलॉगर्स हैं या ट्रैवल करने वाले बहुत सारे जो है वो पैशनेट लोग हैं। पूरी दुनिया से वो लोग आके यहाँ पे जो है वो अपना एक तरीके से कनेक्ट करते हैं, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से जो है वो प्रेजेंट करते हैं अपनी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे याद है कि शायद प्रीवियस, जो कि साइड फ्रॉम द पॉलिटिकल एफिलिएशन, प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर जो है कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी लिए गए थे कि बाहर से जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया था। इस तरीके से जो है वो प्रमोट किया गया था, लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा था। तो मेरा ख्याल में अगर हम इस तरह के इनिशिएटिव्स को मज़ीद बढ़ाएं, मज़ीद जो है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें, हमारे जो डिजिटल के लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम द टेक का जो पार्ट है बेसिकली डिजिटल, तो डिजिटल से बहुत सारे लोगों को हम लोग जो है वो मज़ीद इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, या एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, जो कि इनिशियली किसी भी डिप्लोमेसी का जो है वो इनिशियल पॉइंट है या उसका आगाज़ है। तो हम इस तरह को बहुत सारे जो सॉफ्ट इनिशिएटिव्स हैं वो ले सकते हैं। और मेरा ख्याल के अंदर जो हमारी टेक की एलीट है, बेसिकली आई वुड आई थिंक जस्ट मैं इस टर्म को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद पहले ये यूज़ की गई है या नहीं, लेकिन जो हमारी टेक की एलीट है, या जो हमारा जो टेक्निकल टैलेंट है, या इवन जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप कह लें कि जो बड़ा अच्छा बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं टेक के अंदर, और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, इन सब के अंदर ये एबिलिटी है कि हम लोग जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से अपना एक इमेज बिल्ड
करने की सलाहियत भी रखते हैं, उसको मेंटेन करने की सलाहियत भी रखते हैं, इसको इन्हेंस करने की सलाहियत भी रखते हैं, और वर्ल्ड वाइड रखते हैं। दुनिया की जितनी भी अच्छी इकोनॉमीज हैं, पहले ही जब हमारा इंटरेक्शन होता है यूएस बेस्ड कंपनीज के साथ या वहाँ की क्लाइंटेज के साथ या इवन यूएई या केएसए में, तो उनका पाकिस्तान के बारे में टेक साइड से एक अच्छा इमेज ऑलरेडी से मौजूद है, इनकी कैपेबिलिटी के बारे में, इनके टैलेंट के बारे में, इनकी जो कैपेसिटी है डिलीवर करने की। गो के कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी सामने आ जाते हैं कई दफ़ा डिस्कशंस के दौरान, लेकिन स्टिल जो है एक अच्छा पर्सपेक्टिव पहले से मौजूद है। तो मेरे ख्याल में टेक ऑलरेडी से भी अपना रोल प्ले भी कर रही है, लेकिन इस रोल को अगर थोड़ा सा अगर कोई फैसिलिटेशन मिल जाए, जैसे मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा कि हमें इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन का सामना है, इसके अलावा बिजनेस के हवाले से ओवरऑल भी कंट्री में इन्वायरमेंट उस तरीके से सपोर्टिव नहीं है, लीगल फ्रेमवर्क इतना अच्छा इस्टेब्लिश नहीं है कि हम लोग जो है हम जो हमारे विद इन कंट्री या हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हम सब लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लाइंस हम नहीं करवा पाते। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अगर हम इन चीज़ों को मीट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में टेक ऑलरेडी अपने पोटेंशियल को अचीव कर रही है। इस पोटेंशियल के जो हॉरिजॉन को हम और बड़ा कर सकते हैं, हम इसके जो इफेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो अपनी नेशन के बेनिफिट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये आपकी भी बड़ी अच्छी काविश है कि आपने सब लोगों के अंदर ये एक चीज़, एक न्यू थिंग जो है वो आपने ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाई है, बल्कि आप उसका एक मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्री तो ऑलरेडी ले ही रही है और मज़ीद भी लेती रहेगी, और हम उसका पार्ट भी हैं और उसको इनकरेज भी करेंगे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पब्लिक सेक्टर भी इसको सपोर्ट करे। तो मेरे ख्याल में टेक जो है वो रोल अदा कर भी रही है और मज़ीद करने का पोटेंशियल रखती है। Exactly. बहुत शुक्रिया सजाद भाई, आपने माशाल्लाह बड़ा कम्प्रिहेंसिवली इस सारी चीज़ को सम अप किया है। एक चीज़ जो जब आप मुझे नज़र आते हैं और मेरे जहन में पहला नाम आता है वो एआई का आता है। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा ऐसा क्यों होता है। तो अब आपसे भी और मोहम्मद यूसुफ साहब से भी, और इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर हसनैन मखदूम मौजूद हैं जो कि एकेडेमिया साइड से भी इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो आप तीनों से मेरा क्वेश्चन एक ही है। अगर आप मेरे से दोबारा पूछेंगे मैं दोबारा भी बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहेगा। और वो ये रहेगा कि ये जो एआई, वर्चुअल रियलिटी और ये इस तरह की सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह से ये जो हमारा मीडिया डिप्लोमेसी का एक रेवोल्यूशन हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजीज हमें इसमें किस तरह से हेल्प आउट करेंगी। सो आई गेस यूसुफ साहब से शुरू करते हैं, उसके बाद सजाद अदर साहब इस पे अपनी राय का इजहार करें, और उसके बाद वी हैव डॉक्टर हसनैन मखदूम विद अस। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हम आपकी भी इस बारे में राय जानना चाहेंगे। जी। अच्छा, एआई और ऑब्वियसली जो हमारे ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है विच इज चेंजिंग द लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड इन केस ऑफ मीडिया। जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि हम सोशल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया से हम डिजिटल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। तो उस केस सिनेरियो में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आजकल हम देख रहे हैं ये क्या, ये रोबोट एंकर्स, राइट। बॉट एंकर्स का कॉन्सेप्ट आजकल थोड़ा डेवलप हो रहा है, और इवन हमारी एक मीडिया हाउस है, उसने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके तो उसको एम्बेड कर दिया है कि आपका जो बॉट है वो एक ह्यूमन की जगह पे उसको रिप्लेस कर दिया है, ताकि वो आपको जो न्यूज़ है वो बताता है, ठीक है। तो जो एआई है और एगमेंटेड रियलिटी है, ये ऑलरेडी मतलब प्रैक्टिस हो रहे हैं, राइट, इन द वर्ल्ड, और हम भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली दैट इज being implemented in transferring the information, knowledge, and obviously the news as well. तो इस केस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ऑगमेंटेड रियलिटी है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जितनी भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने सिस्टम में, वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। और ज़रूरत हमें इस समझ की है कि हम अपने आप को इसके साथ कितना जल्दी इम्बेड करके अपने सिस्टम्स को, अपनी चीज़ों को अपने बेनिफिट के लिए, फॉर इंस्टेंस हम एज अ पाकिस्तानी नेशन कितना अच्छा से उसको यूटिलाइज करके तो ग्लोबली अपना सॉफ्ट इमेज क्रिएट कर पाते हैं। ओवर टू यू सजाद हैदर साहब एंड हामिद सईद। थैंक यू यूसुफ।
अच्छा, मेरा मेरा इसमें ये है कि जो एआई बेसिकली है वो ऑलरेडी से तमाम जो लाइफ के स्कूल्स हैं उनके ऊपर उसका बड़ा जो है वो गहरा असर हम लोग पहले से ही महसूस करना शुरू हो गए हुए हैं। लेकिन मीडिया के हवाले से और डिप्लोमेसी के हवाले से मेरा ख्याल है कि इसका रोल अभी मज़ीद भी हम लोग जो है वो इन्हेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मोहम्मद यूसुफ साहब ने बताया कि इंटरनेशनली बहुत सारी इस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं जो कि हम लोकली भी अब अडॉप्ट कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या उसकी जो एप्लीकेशन है वो कुछ हद तक हमें नज़र आती है। लेकिन इसका जो फुल पोटेंशियल है, जाहिर सी बात है हम उसको भी अचीव करने से काफ़ी दूर हैं। जिस तरह से मैं कुछ छोटी एग्जांपल्स जो कि हमारे रिसेंट इवेंट्स में मैंने नोटिस की है, मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। जैसे रशिया यूक्रेन की जो वार हो रही थी, तो उसके अंदर इनिशियली हमने देखा कि बहुत सारी जो है वो डी फेक वीडियोज़ वगैरह दोनों तरफ से जारी की जा रही थी, Exactly. Yeah. और इस तरीके से जो है वो जो नैरेटिव है उसको वो लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे या अपना अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने शुरू में देखा कि बड़ी इंटेंस किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ इस तरीके से की गई जिसमें एआई का जो है वो भरपूर इस्तेमाल किया गया। तो इसी तरीके से जो है हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारा कोई इवेंट होता है, कोई मतलब कोई डिज़ास्टर हो जाता है, नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, या फर्ज करें किसी किस्म का भी कोई भी इवेंट है, तो उसके अंदर जो है वो एआर की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस इंटरनेशनली भी यूज़ की जाती हैं, लेकिन हम लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा इवन जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी रिसोर्सेज की कमी होती है, तो इसमें तो हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए टेक्नोलॉजी को, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक जो है वो उसकी नीड को कम कर देती है, या ज़्यादा इफेक्टिवली हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी बहुत सारी चीज़ों को बेहतर तरीक़ा से कर सकते हैं। जिस तरीके से एआई हमें जो है वो इवन रियल टाइम अपडेट्स लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है, अगर इस तरह के टूल्स वगैरह डेवलप किए जाते हैं कि वो इंटरनेशनल जो भी हमारी नॉलेज बेस है वहाँ से सारी अपडेट्स वगैरह लेके, और मतलब हम इसको काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया के हवाले से भी हम एआई को मज़ीद जो है वो इसके अंदर इंगेज कर सकते हैं, और अपना जो लोकल मीडिया है या इसकी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, इसके हवाले से इसकी एप्लीकेशंस को बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारी कैंपेन्स को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ जो थोड़ी सी लेटेंसी या आप कह लें कि जो लिमिटेशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। लास्ट भी कॉन्फ्रेंस में हमने बात की थी अपने प्रोडिक्टिव एनालिसिस के हवाले से, या हम जो है वो अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करें, तो इसमें स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि जितना मैंने कंटेंट कुछ कंज्यूम किया है, इंटरनेशनल जो लोग ओपिनियन बिल्ड करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो लोग ऑलरेडी से स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और वो बहुत आसानी से, जिसकी एक मैं रिसेंट मेरा ख्याल है शायद वो किस हद तक रेलिवेंट है, लेकिन जब ये शाम के अंदर ये जो इवेंट्स हुए हैं और ये जो अनफोल्ड हुए हैं, हमने देखा कि कुछ ही डेज के अंदर जो है वो सारी सिचुएशन वहाँ पे ऑन ग्राउंड जो है वो चेंज हो गई, और जो कि हमें ये बताती है कि उनका जो जो भी उसके पीछे उन लोगों का वर्कअप था वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। दे नो कि वो कब कौन सा मूव कर रहे थे और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और उन्होंने बड़ी एक मिनिमल एफर्ट के साथ एक अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट किया। एंड आई बिलीव कि उन्होंने जो है एआई के टूल्स और ये तमाम चीज़ें प्रिडिक्टिव एनालिसिस वगैरह अपना जो है या स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो है वो अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। क्योंकि जो वेस्टर्न जो एम्पीरियलिज्म है वो जाहिर सी बात है, और टेक्नोलॉजी उनके बिहेस्ट पे सबसे पहले आती है, वो इसको सबसे अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वो इसको क्रिएट भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम लोग इन चीज़ों को हम लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन के हवाले से जो है वो हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अपनी मीडिया डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितना हम उसको अच्छा विजुलाइज करते हैं या अपने ऑडियंस को देंगे, या जितना हम उसको कंटेंट क्रिएट करें, वो इन्हेंस करेगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आजकल मैं देखता हूँ, यूजुअली मैंने पहले भी बताया, हम लोग ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, मैं काफ़ी सारा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। मैं देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टोरी टेलिंग के ऊपर जो है वो बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में तो मुझे दो तीन नाम ही नज़र आते हैं जो कि ऑथेंटिक और अच्छा कंटेंट इस हवाले से क्रिएट करते हैं। लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारे ऐसे मैं देखता हूँ व्लॉगर्स हैं, चैनल्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो कि बहुत अच्छा जो कंटेंट है वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रिएट करते हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो आगे
जो है वो, अगर हम बात करें डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज़ों को आपस में लिंक करते हैं और लोगों का एक जो है वो परसेप्शन बिल्डिंग और उनका जो माइंड सेट है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है उसमें AI AR वगैरह जो है और सोशल मीडिया ऑलरेडी से भी अपना एक रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन हम इस हवाले से भी दुनिया से पीछे हैं। मेरा ख्याल है कि हम इसको बड़ा अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली हमारी जो इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम लोग ज़्यादा जो इंगेज रहे हैं वो सॉफ्टवेयर की डिलीवरी साइड पे रहे हैं या इवन सर्विसेज की भी डिलीवरी साइड पे रहे हैं। तो उसकी जो एक्चुअल जो एप्लीकेशन है या जिस तरीके से हम ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मेरा ख्याल है हम लोग उस हवाले से अभी एज एन इंडस्ट्री भी टेक साइड से भी हम लोग पीछे हैं। हम लोग एक अच्छी टेक्नोलॉजी बनाने की सलाहियत रखते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके उसके जो बेहतरीन नताइज हासिल करना, इस हवाले से मेरा ख्याल है कि हम लोग अभी एज अ नेशन और एज एन इंडस्ट्री भी हम लोग लैग करते हैं। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। आई एम नॉट श्योर कि ये कितना करेक्ट है, आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। बाकी यही है कि अगर हम लोग लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि अगर हम लोग स्पेसिफिक अपना जो हमारा टैलेंट है जो इस AI और जो इस तरह की एप्लीकेशंस में या इनकी इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व होता है, अगर हम उनको एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर ट्रेन करें और मेक श्योर करें कि सर्टन रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स यील्ड कर सकते हैं डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू। बहुत खूब सज्जाद भाई, माशाल्लाह से हमेशा की तरह बड़ा ही कम्प्रीहेंसिव रिस्पांस। और इस रिस्पांस के साथ ही मैं एक्चुअली मूव करना चाहूँगा डॉक्टर हसनैन मखदूम साहब की तरफ, हु इज़ प्रेसिडेंट फेमस फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेटर्स। बट जस्ट बिफोर आई गो टूवर्ड्स डॉक्टर हसनैन मखदूम, मैं मोहम्मद यूसुफ साहब से चाहूँगा कि अगर उनके कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं अबाउट दिस पैनल, क्योंकि सर के साथ हमारी जो कमिटमेंट है वो 3 बजे तक है, जो कि बज गए हैं। तो अगर आप सर जाते जाते कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें तो वी विल लव टू हेयर फ्रॉम यू। और उसके बाद वी विल प्रोसीड विद अवर अदर पैनलिस्ट। हमारे पास प्रोफेसर इफ्तिखार रसूल शेख साहब मौजूद हैं शाहरुख ऑफिस में, डॉक्टर हसनैन मखदूम हमारे साथ ऑनलाइन है। तो हम आपके पास कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स अब सुनना चाहेंगे एंड विश यू बेस्ट ऑफ द लक जिस भी मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं। थैंक यू आपने ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, इसका एजेंडा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और ऑब्वियसली हमें हेल्प आउट करेगा टू एडवांस आवर लर्निंग टुवर्ड्स द रोल ऑफ मीडिया इन डिप्लोमेसी। तो इसमें हम आपको इंशाल्लाह वी विल बी हियरिंग मोर फ्रॉम यू ऑन दिस साइड एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर, और अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मीटिंग। और थैंक माशाल्लाह यू। से हमारे तमाम स्टीम्ड पैनलिस्ट, अच्छा ये भी बड़ी एक खुशी की बात होती है कि जब हमारे जो स्टीम्ड पैनलिस्ट हैं वो अपना कोई पैनल छोड़ के या अपना कोई कॉन्वॉय छोड़ के वो हमारी मीटिंग में ज्वाइन करते हैं। तो दिस एक्चुअली टेल्स अस कि आप लोग हमें कितना वैल्यू कर रहे हैं और आप इस मीडिया डिप्लोमेसी के इस एजेंडा को कितना वैल्यू कर रहे हैं। सो वी आर रियली थैंकफुल टू यू। और अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने बाकी के पैनलिस्ट के साथ। हमारे पास इरफान खान बलोच मौजूद हैं, सजाद हैदर साहब ने अभी कहीं नहीं जाना सर, आप अभी यहीं पे ही हैं, ठीक है जी। तो आई मूव टुवर्ड्स डॉक्टर हसनैन मखदूम साहब। सर काइंडली लेट मी नो इफ यू कैन हेयर मी। Yes, yes. ऑसम सर, गुड टू हेयर फ्रॉम यू। अच्छा सर, आपसे मेरा जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा एकेडमिक साइड से रिलेटेड होगा, चूंकि माशाल्लाह डॉक्टर डॉक्टर लग गया दोनों के नामों के साथ, तो अब थोड़ी सी डॉक्टर टॉक कर लेते हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड हैं या वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं या इवन वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं, तो हम उनको एथिकली किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं? क्या वो इस आने वाली जो नई काइंड ऑफ डिप्लोमेसी है, जिसको हम मीडिया डिप्लोमेसी कह रहे हैं, इसके लिए वो किस हद तक रेडी हैं? लाइक आर दे 50% रेडी, 100% रेडी? जो भी आपका इसके बारे में एक नज़रिया है, हम वो जानना चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे करिए होंगे, बाकी सब लोग भी ठीक होंगे। जी तो अलहमदिल्ला। इसमें चूंकि मैंने एक लंबा अरसा इस एजुकेशनल फील्ड में गुजारा है, और मैं शुरू करता हूं कि अगर हम के बाद की बात करें, तो जब ये ट्रांसफॉर्म हुआ कि हमने सारी क्लासेस ऑनलाइन लेनी है, वर्चुअल कर दिया गया, तो उसमें हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही तैयार नहीं थे कि वो इस चीज़ के ऊपर आ जाएं कि वो ऑनलाइन इसको क्लासेस दे सकें और वो पढ़ सकें। इवन कि हम पढ़ाते थे कि अगर कोई 200 की क्लास है तो हार्डली 10 लोग उसमें ज्वाइन करते थे, वो भी 10 जो पढ़ने वाले बच्चे थे। किसी ने ज्वाइन किया और मोबाइल रख दिया, तो इस तरह से। तो इसमें अगर मैं बात करूं हमारे इदारों की, तो हमारे इदारे अभी तक इस तरफ नहीं आए प्रॉपरली कि वो स्टूडेंट्स को इस मीडिया डिप्लोमेसी या इसकी जो पावर है
इसके थ्रू क्या क्या किया जा सकता है, वो उसकी तरफ प्रॉपरली नहीं है। मैं तो अपने तौर पर पूरी जो है ना कोशिश करता हूँ, इंडिविजुअली कलेक्टिवली जहाँ जहाँ पर भी हो, कि स्टूडेंट को, मिसाल के तौर पर मैंने बहुत सारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो कि दूसरी जगह पर जाकर उनको जॉब करनी पड़ती है, ट्यूशन पढ़ा रही हैं या एकेडमी जा रही हैं, तो मैंने उनको इस चीज़ के ऊपर लेकर आया कि आप देखें कि ये सोशल मीडिया है, आप इसके थ्रू घर बैठ के ऑनलाइन चीज़ों को कर सकती हैं। तो हमारा जो स्टूडेंट है वो मोबाइल फ़ोन तो यूज़ करता है और एक्स्ट्रा यूज़ करता है, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो एक ये जो तबका है हमारा, जो टिकटॉकर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो लोग तो अपने तौर पर कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ये काम सब लोग नहीं कर सकते, ना ही ये सब लोगों के लिए है। तो लोग सिर्फ उनको देखते हैं, इंस्पायर होते हैं कि जनाब वो देखें उसने यूट्यूब से इतना पैसा कमा लिया, उसने फलां चैनल से इतना कमा लिया, लेकिन वो उनके लिए नहीं होता। हर स्टूडेंट, हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग काम कर सकता है। कंटेंट क्रिएट करना, और उसमें आ जाके जो टूल्स हैं वो बेसिक यही हैं हमारे पास, फेसबुक है, लिंक्डइन है, जितने भी इस प्लेटफॉर्म को हम यूज करते हुए इनमें से चीज़ों को निकाल सकते हैं। कोई भी एक काम है, मसलन अगर मेन चीज़ है हमारे स्टूडेंट्स लर्निंग, उसके लिए गूगल फ्री प्लेटफॉर्म है, इसके बाद आपके पास यूट्यूब, अबव ऑल अभी जो एआई इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी है, वो तो एक बहुत ही बड़ी आसानी है कि आप विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपने जस्ट क्वेश्चन राइट करना है कि आपको फॉर एग्जांपल कि शेक्सपियर की एक पोम रीड करना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट उसका नाम लिखेंगे तो वो आपको निकाल के दे देगा। लेकिन हमें जो चीज़ फेस करना पड़ रही है वो है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी जो है ना वो जंग है एक, जो नेचुरल स्टुपिडिटी है, यानी कि हम दोनों को पीट नहीं कर पा रहे। तो इसमें बहुत सारे लोग आ गए हैं उसके ऊपर, और स्टिल बहुत सारे लोगों ने आना है। तो नो डाउट एजुकेशनल फील्ड में ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आने वाले वक्त में ये सब कुछ वर्चुअल हो जाएगा, सारी चीज़ें वर्चुअल होंगी, उसके एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे। तो अगर हम इसको पॉजिटिवली और अच्छे वे में करें तो उसके एडवांटेज ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, एक अगर हम ऑन साइट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर एक हम क्लास पढ़ाते हैं तो हम हार्डली 40-50 की क्लास पढ़ा सकेंगे। ऑन द अदर हैंड हम अगर ऑनलाइन है, हम जूम के ऊपर हैं या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर हैं, हम 100, 150 टू 100 तक की क्लास को भी पढ़ा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये आने वाले वक्त में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और उसमें ये है कि जो मोस्टली इदारों को फाइनेंस के इश्यूज आते हैं वो इसके साथ रिजॉल्व हो सकते हैं अगर वो इस टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली और अच्छे वे में मैनेज करें और इसका भरपूर फायदा उठाएं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर फॉर सच अ कम्प्रीहेंसिव रिस्पांस। और डेफिनेटली एक एकेडमिक का रिस्पांस लग रहा था, जितना कम्प्रीहेंसिव ये था माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। तो अब चूंकि आपने बात की स्टूडेंट्स के हवाले से, तो इस टाइम हमारे पास यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए इरफान खान बलोच हैं हमारे पास। तो इरफान, आप चूंकि यूथ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी आपने अपनी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अब बात हो रही है कि जी मीडिया के थ्रू डिप्लोमेसी करना, आपने कुछ हो सकता है फॉरेन कंट्री के लोगों के साथ भी मिलकर पढ़ा हो और आपने इस तरह से डिप्लोमेसी करने की कोशिश भी की होगी। अब मैं अगर अपने कुछ याद करूं तो मुझे याद है कि आई स्टार्टेड शाहरुख टेक्नोलॉजीज वाइल बीइंग अ स्टूडेंट। तो मैं बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें करता होता था कि यूनिवर्सिटी जाते हुए शाहरुख का कैप पहन गए, यूनिवर्सिटी जाते हुए जो बैग लेके गए उस पे पीछे शाहरुख का लोगो लगा हुआ है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप एज अ स्टूडेंट और एज अ प्रोफेशनल भी इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या हैं वो छोटी छोटी स्मॉल थिंग्स जिनको हम करके एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट, हम अपनी ये कल्चरल डिप्लोमेसी, अपनी मीडिया डिप्लोमेसी को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच आमिर साहब, इट्स रियली ऑनर्ड एंड स्पेशली हमारे साथ डॉक्टर हसन खून साहब मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। एक्चुअली क्या होता है ना कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जो डिप्लोमेसी है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ग्रो करती है, जैसे हम पूरी वर्ल्ड ग्रो कर रही है, ह्यूमन इटसेल्फ ग्रो करता है। तो एक टाइम था कि जब आपको पता है वो एक गिफ्ट भेजे जाते थे और उससे डिप्लोमेसी रिलेशन बिल्डअप करना, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी मर्ज हुई और उसमें चीज़ें हो गई। और इवन हम देखते हैं, बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि स्पोर्ट्समैन के थ्रू, अपने कल्चर के थ्रू कुछ चीज़ें अपनी कल्चर की भेजी जाती थी। अभी भी एक बड़ा ही आपको रियल एग्जांपल देता हूँ, अगर आप सिंध वाले एरिया में जाते हैं या आप गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं तो आपको स्पेशल किस्म के उनके ट्रेडिशनल जो है ना वो एक कैप या वो जो शॉल देते हैं, जस्ट टू बिल्ड अ कनेक्शन।
जस्ट टू बिल्ड अ रिलेशन। तो अगर आज की हम बात करते हैं डिजिटल एरा की, जिसमें ग्लोबलाइज एक ग्लोबल विलेज में जहाँ पे हम रहते हैं, तो वहाँ पे जो है सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, अभी मैं आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, एक जो है वो यूएस के जो है बेसिकली प्रोफेसर भी हैं और बहुत ही कमाल के थिंकर हैं। तो वो बात करते हैं सॉफ्ट पावर के ऊपर। बेसिकली ये जो जो चाइना का एक 21st सेंचुरी में जो एक नई वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, तो उसमें क्या है कि वो सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। और सॉफ्ट पावर में मल्टीपल चीज़ें हैं, लाइक आपकी एकेडमिक्स आ जाती है, फिर आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है, आपकी इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेज आ जाती हैं कि आप ग्लोबल कनेक्टिविटी को लेके आते हैं। और वहाँ पे एक जो सेगमेंट है वो है मीडिया का, कि आपने कितनी जो है सॉफ्टली अपने आप को पावरफुल बनाने। अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आई थिंक हमारे पैनलिस्ट थे, आपने कहा जब उनका नाम आता है तो मेरे माइंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है। तो द सेम थिंग हैपनिंग, कि क्या होता है कि जब आप किसी कंट्री के बारे में जो है वो उनका उस कंट्री का नाम आता है या उसका फ्लैग आता है, तो आपके माइंड में फौरन से जो है ना उसका एक इमेज आ जाता है। तो वो इमेज कैसे आता है, वो यही है, पहले हमारे पास मेन स्ट्रीम मीडिया था, या हमारी जो है अगर आप इन पर्सन जाते हैं कॉन्फ्रेंसेज में तो आपका इंटरेक्शन होता है। बट नाउ दिस इज द सोशल मीडिया, और कोई भी ऐसी बात होती है तो आपको फौरन से पता चल जाता है कि अच्छा इस कंट्री में ये चीज़ें चल रही हैं। तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑन बीइंग, बस मैंने भी आपको पता है कि स्टार्ट किया, और उसमें यही हमारा पर्पज़ है जिसमें हम बात करते हैं द हैप्पी प्लेस शो। तो उसमें हमारा यही पर्पज़ है कि जितनी भी हमारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया हुआ है, तो उनको हम लाएं, और उनका जो मैसेज है वो इस जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो सोशल मीडिया है इसके थ्रू वर्ल्ड में जो है उसको स्प्रेड करें, ताकि हमारा जो है अभी यहाँ पे हमारे एक एनालिस्ट थे उमेर खान साहब जो बात कर रहे थे, कि हमारा जो है डिफेमेशन का और इस तरह के बहुत ज़्यादा फैक्टर हमें फेस करना पड़ते हैं। आई वॉज ऑल्सो बीन इन इन दुबई अराउंड 2 months अगो। तो सेम थिंग आई आई हैव एक्सपीरियंस, कि क्या होता है कि वहाँ पे अगर कहीं पे कोई जॉब है या कहीं पे कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, तो वो बाकायदा नेशनैलिटीज़ को देखते हैं पहले, कि अगर आपकी किस इंडियंस हैं या कोई और है, तो दे विल प्रेफर ओपनली। पहले तो इस तरह नहीं होता था। तो ये कैसे हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इवन कि अगर हम बात करें वहाँ पे, तो हम सेकंड जो है वो हाईएस्ट पे हैं जो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ पाकिस्तानी। वहाँ की रियल एस्टेट मार्केट में देख लें हम इतने बड़े। बट द रीज़न इज कि अब ये भी टाइम था कि उन्होंने वीज़ा बैन किए होंगे। आई नो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बट उसकी ये भी बहुत बड़ी एक रीज़न होती है कि आप किस तरह जो है अपनी सॉफ्ट पावर को जो है ना बेसिकली ग्रो कर सकते हैं। आपने अभी खूबसूरत बात की कि जब वो शाहरुख आपने स्टार्ट किया तो आप कैप पहन लेते हैं, वो सारी चीज़ें। तो अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात करें, तो उसमें भी यही है ना कि जो एक मुसलमान है या जो मोमिन है वो अपने करेक्टर से पहचाना जाता है कि वो क्या है। सो द सेम थिंग हैपनिंग, हम अपने साथ अपनी जो लेगेसी है वो खा हमारे कंट्री की हो, खा हमारी जो है वो अपनी फैमिली की लेगेसी हो, हमारे उसके बाद किसी इंस्टीट्यूशंस की लेगेसी हो, तो वो हम खुद कैरी कर रहे होते हैं। वो हमारी बात से भी पता चलता है, हमारे एक्शन से भी पता चल रहा होता है, हमारी कमिटमेंट से भी पता चल रहा होता है। सो द सेम थिंग वी हैव टू फॉलो ऑन द अदर एंड। डेफिनेटली सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह का इतने इंपॉर्टेंट टाइम में से निकाल के सबको जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, और अगेन हम उस पर बात कर रहे हैं। तो इसी तरह होना चाहिए हमारे पास, कि हम इसको कितना फ्रीक्वेंटली करें। और अभी सज्जाद हैदर साहब भी मौजूद है, इन्होंने टेक के रेलेवेंट, आई एम नॉट अ बाय द वे एक्सपर्ट, मुझे को टेक के बारे में इतना आइडिया नहीं है, बट थैंक्स टू हिम कि उन्होंने जिस तरह से मेंशन किया, मैं बिल्कुल इनकी बात को सेकंड करूंगा। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट अभी कोई 50+ के करीब जो है वो जो टेक इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे भी मैंने उनके सीईओ जो हैं उनसे मैंने अभी पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए। तो मुझे वहाँ से भी जो चीज़ सीखने को मिली वो यही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है स्पेशली जो ये टेक के रेलेवेंट है, तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। द रीज़न इज़ कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री हैं पॉपुलेशन वाइज इन द वर्ल्ड, और उसमें में जो 65% है वो हमारी यूथ है। तो बेसिकली यही हमारा एक एसेट है, और इफ़ वी वुड यूज देम वाइजली, वो खा टेक के सेक्टर में हो या आप किसी और सेक्टर में यूटिलाइज कर लेंगे, तो डेफिनेटली ये एसेट हमारा जो है हमारी ग्लोबली हमारी कंट्री की इकोनॉमी को भी और हमारा जो एक पॉजिटिव इमेज है उसको भी बिल्डअप कर सकता है। और उसकी एक एग्जांपल अभी हमारे जो उमेर खान साहब ने मेंशन की थी, हमारे जो ओलंपियन थे उन्होंने विन किया है, तो पूरे वर्ल्ड में एक नाम आ रहा था, और वो हमने इंडिविजुअली किया, कलेक्टिवली हमारी एफर्ट नहीं है। बट आई एम जस्ट गोइंग टू समराइज इट, वी नीड अ कलेक्टिव एफर्ट, और उसमें हमें अपनी सॉफ्ट पावर जो है बेसिकली उसको बिल्डअप करना है।
उसके लिए खा हमें मैंगो डिप्लोमेसी करना पड़े, हमें मीडिया के थ्रू डिप्लोमेसी करना पड़े, वट एवर वी हैव टू डू, but we have to improve our the soft power, soft image, not in our country as well, but globally हमें उसको करना होगा. Then we will be able कि हम अपना political landscape पे भी ऊपर आ सकते हैं, हम economically भी जो है अपनी चीज़ों को बिल्डअप कर सकते हैं, हम academic वाइज भी जो है वो ऊपर जा सकते हैं. एंड द सेम थिंग गोज फॉर हमारा जो जो एथलीट का एक सेक्टर में. इवन कि अभी हम बोल रहे हैं, अभी रिसेंटली हमारा जो कबड्डी की जो टीम है, बेसिकली दे वन द वर्ल्ड कप इन न्यूजीलैंड. तो वो भी एक एफर्ट है कि आप मिनिमम रिसोर्सेज में रहते हुए कितनी ज़्यादा जा सकते हैं. तो सेम थिंग हैपनिंग हियर. जब अपनी मैंने अभी रिसेंटली एक पिछले दिनों ट्वीट किया था, जिसके ऊपर था कि पॉपुलेशन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, कि एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है इन आवर कंट्री, रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, उस तरह से हमारा मैकेनिज्म नहीं है, सो हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज देम. तो वहाँ पे एक चीज़ मेरे माइंड में था, जो कि मैंने थॉट ऑफ द डे के नाम से पोस्ट किया, कि अगर आप ग्लोबल में देख लें, जिन जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन ज़्यादा है, दे आर राइट नाउ द ग्लोबल पावर, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरली भी, पॉलिटिकल वाइज भी, एकेडमिकल भी. और उसमें हम बात करें, सबसे पहले चाइना, वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, उसके बाद इंडिया, और उसके बाद फिर आप यूएसए देख लें, ब्राज़ील. सो दे आर द ऑलरेडी. तीन तो ग्लोबल पावर की हमने बात कर ली है, चाइना भी है, इंडिया इट्स ऑल्सो, एंड यूएस हमारे सामने. दे आर द बिग पॉपुलेशन. सो सेम हमारे पास भी वही चीज़ें हैं, ऑल वी हैव इट. बट द थिंग इज, हमें थोड़ा सा हमारा जो सिस्टम है उसको सिस्टमाइज करना होगा. सो आई थिंक वी ऑलमोस्ट हैव एवरीथिंग, बस उसको एक समराइज करके, सॉरी सिस्टमाइज करके, चैनलाइज करके, सो वी कैन यूटिलाइज देम बेस्ट. एंड डेफिनेटली ये जो एक मीडिया डिप्लोमेसी है, definitely it will play a pivotal role to emerge being the global citizen. So yes, this is from my side, Shahrukh. Thank you. थैंक यू वेरी मच इरफान. बड़ा ही कम्प्रिहेंसिव और बड़ा ही मतलब आई शुड से सोफिस्टिकेटेड रिस्पांस आपका. और हमारे यहाँ अगर यूथ से इस तरह के रिस्पांसेस आ रहे हों तो बहुत अच्छा लगता है कि माशाल्लाह इस मुल्क का मुस्तकबिल ना महफूज हाथों में है. तो अब चूंकि हमने मुल्क का मुस्तकबिल तो महफूज हाथों में देख लिया है, अब हम इस मुल्क का जर्नी देखते हैं थोड़ा सा. बहुत ही एक्साइटिंग होने जा रही हैं हमारी अगली चंद मिनट की कन्वर्सेशन, क्योंकि मैं माइक हैंड ओवर करने लगा हूँ प्रोफेसर इफ्तिखार रसूल शेख को, who have over more than 5 decades of experience in media industry. तो वैसे एक मुहावरतन हम कहते हैं ना कि जितनी मेरी उम्र है उससे डबल इनका तजर्बा है, तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जितनी हमारी उम्र है उससे डबल सर का माशाल्लाह तजर्बा है. तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू आई एम हैंडिंग ओवर माइक टू प्रोफेसर इफ्तिखार रसूल शेख साहब, जो कि हमें बताएंगे कि ये मुल्क में डिप्लोमेसी का जर्नी कैसा रहा. एक तो करंट लैंडस्केप है जो हम आज देख रहे हैं, लेकिन ये आज ऐसा क्यों है, वो क्या बैकग्राउंड था, क्या अवामिल थे जो इसको यहाँ तक लाए. तो ओवर टू प्रोफेसर इफ्तिखार रसूल शेख साहब. जी, अस्सलाम वालेकुम. Thank you very much. It's honor for me to participate in this online conference hosted by Sharu Technologies, headed by Mr. Hamid Said and the whole team of Sharu Technologies, Majid Qadri Saab, Junaid Iftikhar Saab, Ishtiyaq Qadri Saab, and Arfa Arbi Sahaba. The topic was very important in the context of the diplomatic relations. It's a very sensitive topic. And we as a nation have to emphasize to maintain the diplomatic relations with our neighbors and with other countries, those who have the same sentiments about us. अगर आप सफारती ताल्लुकात को देखें तो 1947, after the independence of this country, पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात थी सफारती ताल्लुकात उस्तवार करने के साथ. सबसे पहले तो ये हुआ कि हमें हिंदुस्तान के साथ, जिनसे हमने आज़ादी ली, जो एक मुल्क दो हिस्सों में बंट गया, तो पहला जो
मसला जो था वो हिंदुस्तान के साथ एक कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करने का था। लेकिन हमारी बदनसीबी कह लीजिए इस मुल्क की कि हमें ब्रिटिश एम्पायर ने जब दो हिस्सों में तकसीम किया तो एक बोन ऑफ कंटेंशन, एक ऐसी चीज हमारे दरमियान रख दी जो हमारी लाइफ लाइन थी, और वो था कश्मीर। चूंकि ये सोचा गया था कि एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जाए कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी तौर पे कॉर्डियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कभी भी मेंटेन ना हो। ये कोशिश खराब होती गई, ये कोशिश बेहतर होती गई, लेकिन खराब कोशिश जो है वो ज्यादा देर तक रही और अब तक है। जबकि हमारा कल्चर एक था, हमारी फीलिंग्स एक थी, और बहुत हद तक हमारी जुबानें एक थी। और इन दोनों मुल्कों के दरमियान मेरा फोकस रहेगा फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर। इसके साथ साथ हमारा फोकस जो है वो आगे शिफ्ट होगा। हमें चूंकि नेबर कंट्री के साथ, हमसाया मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा रखना था, उसके लिए हमारे जो क़यादत जो थी इस मुल्क की, उसने बहुत से मामलात को ठीक करने की कोशिश की। हमने सफारती ताल्लुकात को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए कल्चरल इवेंट्स का अरेंज किया, हमने स्पोर्ट्स को प्रमोट किया, और क्रिकेट डिप्लोमेसी के साथ हमने इसको और ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की, जो आज फिर एक ऐसी नहज पे पहुंच गई है कि हमारे अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद, जो बहुत अच्छे तो नहीं हैं, वो स्टेब्लिश नहीं हो रहे। अभी जैसे कि मिस्टर हामन ने मैंगो डिप्लोमेसी की बात की, जी हाँ, हमारे एक हुक्मरान थे जिन्होंने मैंगो डिप्लोमेसी को इजाद किया कि शायद आम भेजने से ताल्लुकात मीठे हो जाएंगे, मगर वो ऐसा भी नहीं था। इसी तरह द नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री इज अफगानिस्तान, and similarly with Iran. But above all, the China is the most important country, which is very close to Pakistan, geographically, spiritually, in the sense of the relationship. ये जो थे इन कंट्रीज के साथ हमारे ताल्लुकात को अच्छा बनाने के लिए एक बड़ी अच्छी एफर्ट हुई थी, दैट वाज द सार्क, the collaboration of 5 countries to maintain social, cultural, trade, and other cordial relations, bilateral, दो तरफा ताल्लुकात, दो तरफा तजारत, इन ताल्लुकात को सार्क कंट्रीज के तहत मेंटेन करने की कोशिश की, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी खराब होते चले गए। रीजन, मिस हैंडलिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स। अब जब आप देखते हैं कि व्हाट आर द टूल्स to maintain a strong diplomacy among all the countries, to maintain the strong relationship with neighboring countries and other than countries which are now ruling in the world, like America, like China, like Russia, and so many other European countries. This is very important for Pakistan. हमारे इश्यूज अपने तौर पे मौजूद हैं जिनको सॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक चीज जो हमारा वीक पॉइंट नजर आया है
मेरी सारी स्टडी के दौरान, ऑब्जर्वेशन के दौरान, वो ये था कि हमारी तमाम एम्बेसीज में जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स रखे गए, जो मीडिया एक्सपर्ट्स रखे गए, उन्होंने उन मुल्कों में रह के वो कॉर्डियल रिलेशंस पैदा करने की कोई ऐसी कोशिश नहीं की जिससे हम कह सकें कि उनका फ्रूट जो है वो इस मुल्क को मिल जाएगा। हर मुल्कों के एम्बेसीज में, डिप्लोमेटिक एनक्लेव्स में उनके इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, मीडिया मैनेजर्स होते हैं, मीडिया टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों को यूटिलाइज करने के बावजूद प्रॉपर तौर पे नहीं कर सका। आज बात हो रही है कि हम अगर सोशल मीडिया के ज़रिए से आगे जा रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि क्या सोशल मीडिया हमें वो सब कुछ दे रहा है। अभी मेरे चंद दोस्तों ने बात की, आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू ऑल दोज हु हैव सो participated, like Sajjad Haider Saab, Farhim Sheikh Sahiba, and Yusuf Saab, and other Mr. Makhdoom Saab. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपने देखा कि आपका स्टूडेंट मोहताज हो गया है उस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का जो उसने लर्निंग, जो लाइब्रेरीज में बैठ के बुक्स से हासिल करनी थी, उसकी रीडिंग कैपेसिटी खत्म हो गई और वो सिर्फ उस वक्त वहां तक रहा है जो उसे उसके लैपटॉप से, उसके कंप्यूटर से, उसके मोबाइल से उसको मिल रही। कभी अकेडमिया ने ये सोचा कि हम जिस बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो किस कंडीशन में बैठा हुआ है। मैं कुछ साल पहले दुबई में था, तो जब ये नया नया ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ तो मेरे ग्रैंड सन्स जो थे उनको स्कूल से जब ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहा गया तो ये कहा गया उनके पेरेंट्स को कि ये डिसिप्लिन्ड होके बैठेंगे, यूनिफॉर्म पहन के बैठेंगे, जो बहुत बड़ी बात थी कि बच्चा जो है उसको ज़हन में ये आ गया कि मैं क्लासरूम में हूँ, अपने बेड पर नहीं हूँ, अपने लिविंग रूम में नहीं हूँ और किसी ऐसी जगह नहीं बैठा कि मैं टीचर को ये बता दूं जी कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। और उसका इंटरेस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाता। और हकीकत भी है कि इंसानी जिबिल्लत या उसकी फितरत वो किसी चीज़ को देखने के लिए बहुत देर तक या सुनने के लिए बहुत देर तक उसके साथ अटैच नहीं रहती, उसके साथ मुंसलिक नहीं रहती, जितना कि आप सोच सकते हैं। वो जो क्लास के साथ इंटरेक्शन है, लिविंग में लाइव क्लास के साथ टीचर्स का और स्टूडेंट का, वो इंटरेक्शन ये बताता है कि बच्चा विजिलेंट है, अलर्ट है और वो फोकस कर रहा है। आज वो चीज़ नहीं। अभी जो मैं भी यूनिवर्सिटियों से अटैच हूँ, मैंने देखा कि वो इम्पैक्ट खत्म हो चुका है जो कि हो रहा है। वक्त यह है कि ज़रूरत इसको कि आप उसकी तरफ खास तौर पे तवज्जो दें। चूंकि हमारा टॉपिक है इस वक्त दी मीडिया टूल्स एज फोर्जिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस। मीडिया अगर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा तो आपके ताल्लुकात जो हैं वो मुतासर होंगे। ये सेंसिटिव इश्यूज हैं। हर मुल्क के साथ उसकी बैकग्राउंड में जाके हमें ये देखना होता है कि किस तरीके से हम इस मुल्क के साथ किन लाइनों पर बात कर सकते हैं। आपकी बहुत सी बाउंड्रीज हैं, आपने उनको देखना है। उन्हीं में से कुछ ये है
हमारे कहीं नजरियात हैं एथिकल, कहीं रिलीजन, कहीं लैंग्वेज, कहीं कल्चरल। ये बैरियर्स हैं। इन बैरियर्स को किस तरीके से हमने क्रॉस करना है कि हमारे ताल्लुकात खराब ना हो। इसमें जमीनी रास्ते भी हैं, हमारे ट्रेड रिलेशंस भी है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान अगर ट्रेड होती है तो क्या पाकिस्तान दोस्ताना माहौल में डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान को स्पेस देता है कि उसका माल जो है तजारत का वो अफगानिस्तान जा सके। हमारे कमजोर सफारती ताल्लुकात ही की बिना पर हम ईरान से गैस पाइपलाइन यहाँ तक नहीं ला सके। उसकी वजह ये थी कि अगर हम एक तरफ से जोड़ते थे तो दूसरी तरफ से हम उसको तोड़ते थे। हमारे ताल्लुकात कुछ इस तरह से चले। कितने बरस गुजर गए, वेयर इज द सी पैक, वो कभी बंद और कभी खुल गया। हम चाइना के साथ अपनी दोस्ती को हिमालय से ऊपर कहते रहे, मगर कोशिश नहीं की गई कि उसको स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर हम आगे लेके चले। हमारे ताल्लुकात सर्दमोही का शिकार हैं। हिंदुस्तान तो है ही, क्योंकि हमारे दरमियान एक वो डिस्प्यूट जिसको 1947 पार्टीशन पे छोड़ दिया गया था कश्मीर, वो आज तक वैसे ही है। और अब हम नीम दरूं हाफ हार्टेडली वो तुम्हारा और ये हमारा, जहां पर हम हैं वो कश्मीर हमारा है, जहां पर आप हैं चले फबेहा वो आपका है। लेकिन इसके बावजूद हमारे इस नेबरिंग कंट्री के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। एतमाद का फुकदान है। बिल्कुल हमारा कल्चर 100% नहीं तो राउंड अबाउट 80% हमारा कल्चर हिंदुस्तान के साथ मिलता है। हमारी जुबान, हमारी सकाफत, हमारी फिल्में, हमारे इश्यूज, हमारा लिटरेचर, हमारी नफ्सियात, हमारी खुराक एक ही जैसी है। हमारा रहन सहन ऑलमोस्ट एक जैसा है। उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, अनलेस के वो इलाका जो कि हमसे बहुत ऊपर है, हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश है और दूसरा कुछ इलाके हैं, जबकि मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन आर वेरी क्लोज टू पाकिस्तान। सफारती ताल्लुकात को ठीक बनाने के लिए जिन मामलों की जरूरत है उस तरफ तवज्जो नहीं की जा रही। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है और जहां तक इसने रोल अदा किया है वो हक अदा करने के पूरी तरह तो नहीं है। इवन देन वी नीड टू फोर्ज द यूनिटी among the all countries, those who are aligned with our country। आज अगर अच्छे ताल्लुकात होते तो एक दफा हिंदुस्तान के साथ जब क्रिकेट मैच हुआ था पहला, तो वीजा इस तरह से मिला था जैसे कि आप एक आम गाड़ी की टिकट ले गए और लोग धड़ाधड़ इंडिया गए। इसी तरह से जब इंडियन टीम पाकिस्तान आई तो हिंदुस्तान से कई हजार लोग आए। उसी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फोर्जिंग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान ने एक कदम और आगे किया। हमने सिख कम्युनिटी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमने लांगा एक रास्ता जो नारोवाल के साथ करतारपुर का है, हमने उसको ओपन किया ताकि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी जो है वो सिख कम्युनिटी के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों
और वो ताल्लुकात जो ओवरऑल उनकी गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस करे। और हमने उस कॉरिडोर से, उस मोहब्बत के कॉरिडोर से एक रास्ता खोला कि वो सिख आसानी के साथ अपनी मजहबी इबादत के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। और पाकिस्तान ने कुशादा दिली के साथ उन्हें हसन अब्दाल के लिए, पंजा साहब के लिए, ननकाना साहब के लिए कभी नहीं रोका, कोशिश की कि वो लोग आए। ये मजबूत सफारती ताल्लुकात की एक बुनियाद थी। लेकिन इसका फायदा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पूरी तरह नहीं उठा रही, और ना ही हम। यही ताल्लुकात जो हैं, हमने हिंदुस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लिए भी उसको मजबूत किया, जो यहाँ पर अपने मजहबी मुकामात की ज़ियारत के लिए आना चाहते हैं। और उनके लिए अगर कोई मुश्किलात पैदा हुई हैं तो वो हमारे सफारतकारी की कमज़ोरी है। और हमने उन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर इतना गहरे तौर पे तवज्जो नहीं दी। आज हमारे ताल्लुकात सफारती तौर पे अगर ईरान के साथ बहुत अच्छे नहीं तो कुछ इतने बुरे भी नहीं। इराक और शाम, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है, उनके एक रिलीजियस ताल्लुक है, रिश्ता है उनका। वो है हमारी वो अहले सुन्नत जमात के अलावा जो है अहले तशी। अगर ईरान के साथ, इराक के साथ, शाम के साथ और दीगर उन मुल्क ममालिक जो नेबर हैं, थोड़े से फासले पर हैं। नेबर वही नहीं कि जो आपके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, नेबर वो भी है जो एक घर के साथ दूसरे या तीसरा घर है, वो भी तो आपके नेबर है, उसी मोहल्ले के ही वो लोग हैं। लिहाजा हमने शिया कम्युनिटी को हमने फ्लोरिश नहीं होने दिया, उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया कि वो अपनी ज़ियारतों के लिए इन मुल्कों की तरफ जा सके। क्या हमारे यहाँ कुछ कमी थी या उन मुल्कों के साथ कोई ऐसा मसला हुआ, तो साबित ये हुआ कि हमारे सफारतकारी के जो मामला थे उसमें थोड़ा सा जो है वो मसला पैदा हुआ। और ये चीज़ें हैं। इसी तरह से चाइना के साथ, तो सफारती ताल्लुकात के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कोई सिलसिला अडॉप्ट करें, आप कल्चर का कोई, स्पोर्ट्स का कोई जरिए इस्तेमाल करें, आप उसके साथ कोई भी डिप्लोमेसी जो है उसको मजबूत करने के लिए, जब तक अच्छे सफारती ताल्लुकात न होंगे, दोनों मुल्क और दीगर मुल्क एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकते। तो वक्त है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत है इस बात की कि आप इस चीज़ को गौर से सोचें, समझें, देखें और मीडिया को इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो उन ताल्लुकात को और ज़्यादा फ्लोरिश करे। और हमारी एम्बेसीज में जो इंफॉर्मेशन के लोग बैठे हुए हैं, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर उस मुल्कों के साथ, उनकी सकाफत के साथ, उनके लोगों के रहन सहन के साथ अपने ताल्लुकात को इस तरीके से बनाएं कि वहाँ से के अखबारात के साथ, वहाँ की टेलीविज़न के साथ, वहाँ के रेडियो के साथ वो अपने आप को क्लोज करें और अपने मुल्क के तमाम मामलात को प्रॉपर तरीके से प्रोपोगेट करें। ये प्रोपोगंडे का दौर है। और अब हम एक ग्लोबल विलेज बन चुके हैं। आनन फानन बात हवा के पन्नों पर फौरन दूसरे मुल्क पहुंच जाती है, तो हमें उस तरफ गौर करना है, तवज्जो करनी है और ये देखना है कि हमारा मीडिया कितना अफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है। मेरा ख्याल है कि मेरे दीगर दोस्त मेरे ही इस बात को आगे बढ़ाना चाहें तो आई विल वेलकम देम, और कोई चीज़ अगर कमी है तो वो बताइएगा कि किस तरीके से ताल्लुकात को, दो मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात को एक हमसाए, अच्छे हमसाए के तौर पे भी और एक वैसे दोस्त मुल्क के तौर पे भी हमें किस तरह से मजबूत करना है।
उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इफ्तिखार रसूल शेख साहब, इतना एक्सपीरियंस से भरा हुआ अपना तमाम नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जैसे मैंने सर की टॉक से पहले मेंशन किया कि यूथ ने अपना पर्सपेक्टिव दिया, एक्सपीरियंस लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव दिया। सो शैडो टेक्नोलॉजीज में हम अक्सर ये बात करते हैं कि वेयर पैशन मीट्स एक्सपीरियंस। तो हम लोग जो कि यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग पैशनेट हैं, ओवर एनर्जेटिक हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, वी हैव क्रेजी आइडियाज इन ओवर हेड। लेकिन बहुत ज़रूरी है पहले उन लोगों से ये जानना जो ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और कुछ अगर मैं थोड़े से लिटरेचर से वर्ड उधार लूँ, तो ये हम वो लोग हैं जो नए दीवाने हैं। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी ये तमाम काम कर चुके हैं। मतलब इसको हमने इस दफ़ा अपने ऐड पंजाबी में भी बनाया, तो पंजाबी में कहते हैं कि खा चुके हैं, हंडा चुके हैं। तो इनका पर्सपेक्टिव जानना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त सलमान आबिद साहब भी मौजूद हैं। सलमान साहब, बताइएगा कि आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी। जी, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब हमारे पास इंशाल्लाह 2 पैनल्स में हमें एज एन स्टीम पैनलिस्ट ज्वाइन करेंगे। और अब बस वक्त आया है कि इस पैनल को हम कंक्लूड करें। सज्जाद हैदर वड़ाई साहब हमारे साथ अभी तक मौजूद हैं। सर, हम आपका तहे दिल से मशकूर हैं आपके, कि आपने माशाल्लाह इतना सारा वक्त निकाला। और जाते जाते अब हम ये जो पैनल को कंक्लूड करने की जिम्मेदारी है, ये हम आपके कंधों पर डालेंगे, क्योंकि आप हमारे वो पैनलिस्ट हैं जो माशाल्लाह एंड तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं। और सजाद भाई माशाल्लाह हमेशा ही बहुत शफकत करते हैं, और बहुत ज़बरदस्त रोल है सजाद भाई का ये एआई के हवाले से और ह्यूमन मेटाटेक के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो सर, थोड़ा सा जाते जाते एक दफ़ा फिर ये एक्सपीरियंस, पैशन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन सब का तड़का लगाते हुए अगर आप कंक्लूड करना चाहें इस पैनल को, और ताकि फिर इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स की तरफ मूव करें। थैंक यू हामिद, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे सकूं। तो मेरा ख्याल में देखिए, हमारे पास माशाल्लाह से एक ज़रखेज़ ग्राउंड पहले से मौजूद है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हवाले से है या ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से है। बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिस पे हम सब पैनलिस्ट ने, सब लोगों ने अपनी राय भी दी है, बात भी की है। जैसा अभी सर बता रहे थे कि हमने डिप्लोमेटिकली कैसा परफॉर्म किया है। तो मैं इसमें टेक की बात भी करूंगा, और टेक के जो बेसिक में हमें जहाँ पे अपनी फाउंडेशन को सॉलिड करना है, वो बेसिकली मेरे नज़रिए के मुताबिक वो हमारी मोरालिटी है, हमारे अखलाकियात हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद हमारी पॉलिटिक्स है। एक दफ़ा ये चीज़ें सेटल होती हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कि टेक के लोग जो कि अभी बहुत पावरफुल हैं कंट्री के अंदर माशाल्लाह से, बहुत जो है वो एफिशिएंट हैं, इफ़ेक्टिव हैं, रेवेन्यू लेके आते हैं और अपना एक बड़ा अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। वो हमारी फंडामेंटल्स को ठीक करने में भी अपना रोल अदा कर सकते हैं, जिसकी मैंने बात की है कि हमें बेसिकली अपना वैल्यू सिस्टम जो है वो जो वीक हो गया ओवर द टाइम, उसको ठीक करना है। अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। पॉलिटिक्स जैसा कि है वो आइडियाज़ को शेप करने का नाम है, और जो है वो अच्छे तरीके से उन चीज़ों को आगे परसू करने का नाम है। अनफॉर्चुनेटली हम जहाँ पे चले गए हैं, हम ऐसा डिज़र्व कुछ नहीं करते। जैसे कभी हमारे एक पैनलिस्ट बता रहे थे कि हम पांचवी बड़ी जो है वो नेशन है। तो मेरा ख्याल है कि हमारा एटलीस्ट अगर पहला नहीं तो पांचवा नंबर तो दुनिया में होना चाहिए हर लिहाज से, और डिप्लोमेटिकली भी हमें इतनी स्ट्रांग होना चाहिए, और हमारा पोटेंशियल भी है। तो हम अगर अपने वैल्यूज़ को ठीक कर लेते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को ठीक करते हैं, और टेक भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। और एआई का ख़ास तौर पे, एआई की इम्प्लीमेंटेशन से हम बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो हम सारी दुनिया के लिए करते हैं। तो मेरा ख्याल है हम पाकिस्तान की मार्केट्स के लिए भी अपनी प्रोडक्ट्स को लेके आ सकते हैं, और हम इन नई टेक्नोलॉजीज़ की मदद से भी बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और हमें अपने पैशन को और अपनी स्ट्रेंथ्स को, जैसे आपने कहा, हमें इस चीज़ में उसको बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। मैं, मेरी टीम, ह्यूमंस मैटर टेक, और आई होप कि सारे पैनलिस्ट, हम सब लोग विलिंग भी हैं, पैशनेट भी हैं। तो हम बिल्कुल, कोई अगर ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं तो मोर देन वेलकम। हम लोग तो अपनी तरफ से बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे और करते रहेंगे ऐसी चीज़ों में। तो इंशाल्लाह हमारी जो डिप्लोमेसी है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, या बाकी जितने भी दुनिया में अदर कंट्रीज़ हैं, या ओवरऑल, अब तो खैर कंट्रीज से भी थोड़ा कॉन्सेप्ट ऊपर चला गया है कि हम लोग जो है वो इंटरकनेक्टेड ही हैं। और हम लोग तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं डेली बेसिस पे, कि हम ऑस्ट्रेलिया से लेके कैलिफोर्निया तक जो है वो लोगों से बात कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली हम सब लोग ह्यूमंस हैं। ये झंडे और वो सारी चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है,
बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बॉर्डर्स जो है वो फेड भी हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की ताकत के साथ। तो हमें इस चीज़ को अडॉप्ट भी करना है और समझना भी है, और वो जिस सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात हुई है, मेरा ख्याल है हम उस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जो है अपने इस मैसेज को बाकी लोगों को भी स्प्रेड करने में और कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं, तो देर इज़ नो डाउट कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का और इस यूथ का और इस दुनिया की पांचवी बड़ी कौम का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है, और हमें पॉजिटिव ही रहना है। तो मेरी तरफ से यही रिमार्क्स। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद भाई, इतने अच्छे तरीके से पैनल को कंक्लूड करने के लिए। और हमारे पास, जैसा मैंने जिक्र किया, कि सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, जो कि हमारे दो पैनल्स में हमारे मेहमान हैं। तो सलमान साहब, ये पैनल जब हम कंक्लूड कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस हवाले से अपनी राय का मुख्तसरन इजहार करें कि जो मीडिया का रोल है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। आप माशाल्लाह से एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, पब्लिक पॉलिसी एडवाइज़र भी हैं, और आइडिया के साथ आप एज एन एग्जेक्टिव डायरेक्टर सर्व कर रहे हैं। तो आप इतने एक वसी तजर्बे के साथ किस तरह से देखते हैं कि हम इंटरनेशनल रिलेशन में मीडिया डिप्लोमेसी के ज़रिए से एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ऑल्दो हम ये पैनल कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन आपकी राय जाने बगैर आगे जाना नामुनासिब होगा। तो हम चाहेंगे कि आप भी कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस पे शेयर करें। देखिए, बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे जो मीडिया होता है वो दो मुल्कों के दरमियान या दाखिली सतह पे जो हमें तनाज़ात होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको मिनिमाइज करता है और एक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हार्मोनी पैदा करता है ताकि हम रेजोल्यूशन की तरफ जा सकें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट का मीडिया जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की बेसिस के ऊपर उभरता है और तनाज़ात को पैदा करता है। अगर तनाज़ात नहीं भी हैं तो तब भी तनाज़ात को जन्म देता है, क्योंकि जो रेटिंग बेस्ड मीडिया है इसकी मजबूरी है कि ये हाइप को क्रिएट करता है और प्रोपेगेंडा को बेस्ड करता है। इस वजह से ये जो जंगी जुनून है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, ये हमें, अगर आप हमारे से ज़्यादा जंगी जुनून आपको हिंदुस्तान के मीडिया में नज़र आएगा। वजह यह है कि जो मीडिया डिप्लोमेसी है उसका काम ये होता है कि वो हुकूमतों पर और स्टेट पर एक दबाव पैदा करता है कि वो एक तनाज़ात से बाहर निकलकर पीसफुल प्रोसेस की तरफ जाए और जो लोगों के जेन्युइन इश्यूज हैं, तालीम के, गुर्बत के, माशी बदहाली के, गवर्नेंस के, सिक्योरिटी के, उन पर तवज्जो दे। लेकिन अगर हमने अपनी एनर्जी जो है इंसानी तरक्की की बजाय जंगों पर और तनाज़ात पर लगानी है तो फिर उससे रियासत का निज़ाम कमज़ोर होता है। तो इसलिए मैं तो मीडिया डिप्लोमेसी को इस टर्म में यूज़ करता हूँ कि मीडिया का काम ये है वो जंगों के मुकाबले में अमन की बात करे, आमरीतों के मुकाबले में जमहूरियत की बात करे, समाजी अदम इंसाफ के मुकाबले में इंसाफ की बात करे, माशी नाहमवारियों के मुकाबले में हमवारियों की बात करे और तफरीक के मुकाबले में बराबरी की बात करे और दबाव डाले रियासती निज़ाम पर, हुक्मरानी के निज़ाम पर कि वो अपने गवर्नेंस के निज़ाम को मुनसिफाना और शफाफ बनाए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड होना चाहिए दुनिया भर में। अभी तो हमारी पहचान इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के साथ साथ गैर जमहूरी माशरे के तौर पर है, गैर इंसानी सलूक के हवाले से है और लोग हमारे माशरे पर बेतहाशा सवालात उठाते हैं। उसकी एक वजह यह है कि खुद हमारा मीडिया भी पाकिस्तान की तस्वीर जिस अंदाज से पेश करता है उससे उस नारे को तकवीत मिलती है कि शायद हम एक महज़ब माशरा नहीं है, हम एक महज़ब जमहूरी मुल्क नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ मीडिया पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तनाज़ात को हल करने में कलीदी किरदार अदा करे और एक ऐसा माहौल पैदा करे जहाँ हुकूमतें और रियासती निज़ाम जो है वो दबाव में आए और दबाव में आकर वो ऐसी पॉलिसियाँ इख्तियार करें जो माशरे को महज़ब भी बनाए और पुरअमन भी बनाए और फिर सियासी और माशी तरक्की के धारे में भी शामिल कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह बड़ा कम्प्रिहेंसिव वे में आपने इस पैनल के कंक्लूजन में बहुत अच्छा एडिशन किया। सज्जाद हैदर साहब ने इसको बड़े अच्छे से कंक्लूड किया, प्लस आपके रिमार्क्स ने इस पे एक और इसमें एक अच्छी लेयर ऐड की। थैंक यू सो मच। और आपको हम मज़ीद डिटेल में भी सुनना चाहेंगे, एक और पैनल में भी आप हमारे साथ इंशाल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं एज एन एस्टीम्ड पैनलिस्ट। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर कि आप अपना एक्सपीरियंस वहाँ भी शेयर करें। तो अब वक्त हुआ चाहता है जिस पैनल को कंक्लूड करने का। मैं एक दफ़ा दोबारा से इंतहाई मशकूर हूँ हमारे तमाम एस्टीम्ड पैनलिस्ट का, जिसमें हमारे पास प्रोफेसर इफ्तिखार रसूल शेख साहब ने ज्वाइन किया, मोहम्मद उमैर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, फ़रहीन शेख साहिबा, सलमान आबिद साहब, इरफान अजमल खान, अली अजीमी, सज्जाद हैदर साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब और डॉक्टर हसनैन मखदूम साहब। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया।
इस पैनल को अब हम यहाँ कंक्लूड करेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो शारू टेक्नोलॉजीज़ के दो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, फैशनी.pk और पीस बाय, जो कि पाकिस्तान में अमन के फ़रोग के हवाले से एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। तो इसकी एक मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन आप लोगों को पेश की जाएगी 10 मिनट के अंदर अंदर, और फिर इसके फ़ौरन बाद हम अपने पैनल 2 पे मूव करेंगे. We will be moving forward towards our panel 2. We already have one of our international speakers, Ms. 𝐂𝐮𝐫𝐞𝐧𝐭, with us. So we will be welcoming her formally at 4 p.m. According to Pakistani time. And we have other esteemed panelists with us. We have Mia Abdul Rashid Sahab with us, who will be also talking on this topic. We recently got joined by Professor Rafraf Sahab, who will also share his experience related to media diplomacy. So we will quickly share a short presentation about Sharu Technologies initiatives, Fashion PK and Peace by. So for this presentation, I'll hand over floor to Ms. RB, so she can formally begin with the process. A heartfelt thank you to all the esteemed panelists and our brilliant moderator, Mr. Hamid Said, CEO of Sharu Technologies, for guiding us through such a thought-provoking discussion on media's role in international relations. Your valuable insights and perspectives have truly enriched our understanding of this critical subject. We are grateful to your time, expertise, and meaningful contributions. Now we move forward to the presentation of our two ventures, Fashni PK and Peace by. These initiatives serve as platforms for cultural diplomacy, promoting cross-cultural exchange, creativity, and global understanding. Let's explore how these ventures are driving cultural connections and fostering diplomatic ties through innovation and entrepreneurships. Okay, welcome back everyone. A very good evening to all of you. So now we are going to present an initiative of Sharu Technologies Private Limited named Peace by, Peace be upon you. That's an English translation of our formal Muslim greetings when we say Assalamu alaikum. So Peace by is the English translation of Assalamu alaikum. So this particular initiative, we took it back in 2020 when there was pandemic and when there was a sheer need of promoting peace across the country as well as across the borders. Right. So with me is our creative head, Mr. Ishtiaq, who is also gonna co-present Peace by with me. And we'll be also talking on Fashion PK, that how a small platform transformed the cultural diplomacy face of Pakistan, and from IT industry of Pakistan, how we contributed towards this particular thing. So Mr. Ishtiaq, we'll start with the problem statement that was there and that we solved. Assalamualaikum. My name is Mohammad Ishtiaq Qadri. I'm creative head in Sharu Technologies Private Limited. जी, जो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम नज़र आई कि हमें ये पीस बाय क्यों करना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले कॉरपोरेट कंपनियां हमारी नज़र में आती हैं, CSRs हैं, कि उनको अपनी वॉल पे, अपने ऑफिस में या कहीं पे भी एक ऐसा पोर्ट्रेट, ऐसी कैलीग्राफी उनको चाहिए होती है जिसमें किसी भी मज़हब को या किसी भी उनके ऑफिस में काम करने वाले कोई और जो फिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको हर्ट ना हो किसी भी चीज़ के मामले में। तो उनको एक ऐसे पोर्ट्रेट चाहिए होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। मार्केट में अवेलेबल ना होने की मुराद ये है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। अगर वो कहीं लगाते हैं तो उनमें किसी मसलक को या किसी और रिलीजियंस को कोई ना कोई मुश्किलात पेश आती हैं कि ये हमारे में सही नहीं है। तो इसलिए हमने इस चीज़ को देखते हुए ये पीस बाय को शुरू किया था।
और सेकेंडली एज इश्तियाक राइटली साइड के इसी तरह से जो दूसरी साइड ऑफ पिक्चर है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं जो ये तमाम आर्ट वर्क जनरेट करते हैं, कोटेशंस जनरेट करते हैं, पेंटिंग्स, कैलीग्राफी, ड्राइंग्स, दे कैन क्रिएट स्टोरीज, पोइट्री एंड क्राफ्ट वर्क एक्सेट्रा। तो उनके पास भी दे डोंट हैव एनी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन सेल दीज ऑल दीज गुड्स टू टारगेटेड ऑडियंस। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसके लिए एज अ सोल्यूशन हमने एक आइडिया प्रपोज किया पीस बाय का, जो कि एक ऑनलाइन वेब बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और ये ऑनलाइन वेब बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ बैक है, जैसे कि ब्लॉकचेन फॉर डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी एंड एनहांस साइबर सिक्योरिटी टू अचीव प्रमोशन ऑफ पीस, हार्मनी, टॉलरेंस, इक्वालिटी एंड को एग्जिस्टेंस। तो आज जब हम मीडिया डिप्लोमेसी की बात भी कर रहे हैं तो इस को एग्जिस्टेंस के फलसफे पे हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि वी ऑल कैन को एग्जिस्ट। ये दुनिया हमेशा से ही को एग्जिस्टेंस के फलसफे के तहत बनाई गई थी। ये दुनिया कभी भी इस तरह से डिज़ाइन नहीं की गई थी कि यहाँ सिर्फ एक ही मज़हब के लोग रहेंगे या एक ही मसलक के लोग रहेंगे या एक ही रंग, एक ही ज़ुबान, एक ही नस्ल के लोग रहेंगे। ये दुनिया कभी भी इस तरह से डिज़ाइन नहीं की गई थी। तो ये दुनिया रंग बिरंगी थी, ये दुनिया कलरफुल थी, ये दुनिया मतनवो थी, ये दुनिया डाइवर्स थी, ये दुनिया इंक्लूसिव थी, और इसको ऐसे ही होना चाहिए। So as a solution, what we did, we created a website to upload these quotations, public services messages and artwork focused to peace promotion and importance. और इसके साथ ही साथ इसमें टेक्नोलॉजिकली हमने क्या किया कि we made a panel of diverse peace educationists and promoters जो कि इसको मॉडरेट करते हैं। तो इसमें होता इस तरह से है कि हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई भी आर्ट वर्क अपलोड होता है और वो सेल हो जाता है। एक एक्सपीरियंस लोगों का पैनल है जो कि इसको मॉडरेट करता है और चेक करता है कि इसमें कोई इस तरह का आर्ट वर्क तो नहीं आ रहा जो कि प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो इसी तरह से हमारी फिर वैल्यू प्रोपोजिशन ये है कि ये प्लेटफॉर्म फोकस्ड है टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। ये सिंपल, इट्स नॉट जस्ट अनदर ई कॉमर्स वेबसाइट। ये डिसेंट्रलाइज है इन अथॉरिटी और मॉडरेटेड बाय एक्सपर्ट्स है। वी हैव अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स विद अस। और ये सस्टेनेबल और स्केलेबल है। इसका एक सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट है, यानी कि ये आर्टिजन्स जो हैं हमारे उनको एम्पावर कर रहा है। एंड व्हेन एवर इट कम्स टू आर्टिस्ट, तो हमारे पास विमेन को, माइनॉरिटीज़ को और यूथ को एम्पावर करने का ये एक बहुत अच्छा रास्ता है। इसमें हमारी जो टारगेट ऑडियंस है इसके हवाले से इश्तियाक हमें कुछ से बताएंगे। जी, इसमें हमारी जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो है कॉर्पोरेट कंपनीज, पीआर एजेंसीज, क्योंकि इनमें बहुत से स्टेप फॉलो होते हैं। पीआर एजेंसीज में रोज आना जाना होता है वहाँ का बहुत। तो हम पीस प्रमोट करना चाहते हैं, वो पीआर एजेंसी किसी भी किस्म की हो या कोई भी हो, किसी भी रिलीजन से हो, कुछ भी हो। सोशल मीडिया, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप्स हैं, एकेडमिक हैं। बच्चे को जब हम शुरू से ही ये चीज़ बताना शुरू करेंगे, इसलिए हमने एकेडमी को किया, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को किया, कि उनको जब शुरू से इस ये चीज़ में ग्रूमिंग दी जाएगी तो वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो पीस प्रमोटर एनजीओ हैं हमारे पास, बहुत सी हैं, रिलीजियस हार्मनी हैं और आर्टिस्ट हैं। और ये हमारी मेन टारगेट होती है। आर्टिस्ट इसलिए हैं कि आर्टिस्ट जो चीज़ बनाएंगे और वो ही कहीं प्लेस होगी तो फिर ही पीस फैलेगा। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही इसका ये जो हमारा इनिशिएटिव है इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। एंड फॉर द सेम रीज़न अल्हम्दुलिल्लाह दिस इनिशिएटिव गॉट पाशा आईसीटी अवार्ड, एंड दिस इनिशिएटिव ऑल्सो गॉट ह्यूज एप्रिसिएशन for multiple embassies, including but not limited to American embassy here in Pakistan. So this is first of its kind initiative, and it's a go-to place for peace promotion and materials that is carefully analyzed by panel of experts and public. It is bringing to the surface the old forgotten message of peace and empathy, presenting the empathetic, peaceful, non-violent and non-extremist side of every community. तो हमारे पास दुनिया में मुख्तलिफ तरह की कम्युनिटी हैं और हर कम्युनिटी में एक्सट्रीमिस्ट और नॉन एक्सट्रीमिस्ट, वायलेंट और नॉन वायलेंट सेगमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली हर रिलीजन, हर कम्युनिटी ये चाहती है कि उसका जो नॉन एक्सट्रीमिस्ट, नॉन वायलेंट साइड है, जो कि उसकी असल साइड है, कोई भी रिलीजन एक्सट्रीमिज्म नहीं सिखाता, कोई भी मेथोलॉजी जो है वो वायलेंस नहीं सिखाती, तो उस फलसफे को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ब्रिंगिंग टू द सरफेस दैट द ओल्ड फॉरगॉटन मैसेज ऑफ सूफीज़म, ऑफ आर्ट, ऑफ कल्चर। तो इस चीज़ के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म जनरेट किया, and it have created a very positive change in way people give gifts to each other. We have revolutionized the way people give gifts to each other. अब लोग एक दूसरे को जो गिफ्ट देते हैं वो भी इसी तरह के प्रमोशनल और अवेयरनेस से भरे हुए गिफ्ट्स होते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं मार्केट में। और इसके साथ साथ ही चूंकि आज हम मीडिया डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, और मीडिया डिप्लोमेसी की बात के साथ पीस बाय की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की वजह से वी आर सीइंग
न्यू कंबाइंड राइटिंग्स, आर्ट वर्क, पीस कैंपेन्स एंड रिसर्च वर्क, जिसमें इंटरफेथ और कल्चरल हार्मनी को प्रमोट किया जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे हुए लोग यूके यूएसए में बैठे हुए लोगों के साथ मिलकर कंबाइंड आर्ट वर्क जनरेट कर रहे हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ इनिशिएटिव we wanted to take, and alhamdulillah we have done that. And with that platform we have generated at least 0.5 million online users, 3,000 plus beneficiaries in year one. It is globally scalable and we are expecting a 20% growth rate here. So this is our team on mission. Hamid Said, myself, I was joined by Junaid Iftikhar, who is our CBO. Then we have our CIO, our COO, Mohammad Majid Qadri, who has done his master's in GIS. We have our creative head, Ms. Arfa RB. We have Ishtiaq with us, who is also our creative head department. And we have Saad Wasim with us, who is handling the technology side of it. Right, so this is our platform. Where you can buy all these things online. You can visit art centers, galleries, and exhibitions to see all this artwork. You can connect as a peace, youth, and art activist in these summits. And even if you are an academic, corporate, or startup, so we are open to collaboration. So here is our call of action. You can always reach us to peacebyacharo.com, and you can also connect through our contact number. So here is a very quick overview of our website platform that I'm just going to show you guys. Right, so this is the website of fashiony.pk that have a lot of artistic things on it, and we have handmade jewelry and crafts made by our Pakistani artisan who are creating a very good diplomatic face all across the world, and these things are being delivered to across the globe, and people all across the world are just loving them. So you can see the kind of artwork over here. We have artwork in calligraphy category. So this is being done by multiple artists across the globe, especially from Pakistan. You can see the quality of artwork, right? So this is the platform we have developed to promote peace, harmony, collaboration, coexistence, and the diplomatic tools among the nations. So you can anytime see it on www.fashiony.pk. I'll quickly wrap this conversation over here because now this is the time to move towards the second panel of the day. That is again on media diplomacy, and we are joined by a few of our esteemed panelists. We have our international speaker, Ms. 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭 with us. I can see Mr. 𝐂𝐮𝐬𝐽𝐿 Sohrawardy is with us. I can see Sylvester Joseph is with us. So I can see many familiar faces. So I'll quickly wrap my presentation about Peace by and fashiony.pk, and I'll hand over the mic to the Master of Ceremony, Ms. Arfa RB, so she can begin with the formal proceedings of panel 2. Thank you very much, everyone. Keep creating a positive impact. Thank you so much, Sir Hamid and Sir Ishtiaq. And now I would like to extend my heartfelt thanks to all the 50 newspapers and 10 websites that published the news about our first international online conference on media tech. Your support in spreading the word and helping us reach a wider audience has been invaluable. We truly appreciate your partnerships and are grateful to your contributions. Thank you once again for your continued support. The name of some newspapers are Delhi Harif, Lahore, Delhi Taza Akhbar, Lahore, Delhi Mashriq, Lahore, Delhi Sayadat, Bahawalpur, Delhi Nawai Waqt, Lahore, Delhi 92 News, Lahore, Delhi Aghaze Safar, Multan, Delhi Razdar, Multan, Delhi Frontline, Lahore, Delhi Kamas, Lahore, Delhi Azad Pakistan, Lahore, Delhi Final News, Lahore, Delhi Sahafat, Lahore, Delhi Media News, Lahore, Delhi Mubassir, Lahore, Delhi Postmortem, Gujranwala, Delhi Tasveer Mashriq, Lahore, Delhi Sama, Lahore, Delhi Sarzameen, Lahore, Delhi Nai Baat, Lahore, Delhi The Journalist, Lahore, Delhi Tarjuman, Lahore, Delhi Kismat, Lahore, Delhi Sadae Haq, Lahore, Delhi Pakistan Youth, Lahore, Delhi Khuli Baat, Lahore,
डेली जुस्तजू न्यूज़ लाहौर, डेली JN पाकिस्तान इस्लामाबाद, डेली हक की आवाज़ सरगोधा, डेली हमारा पाकिस्तान लाहौर, डेली अवामी लीडर लाहौर, डेली असरार सहाफ़त कराची, डेली पाकिस्तान नेशनल लाहौर, डेली द नेशन न्यूज़ पाकिस्तान कराची, डेली जियो न्यूज़ पाकिस्तान कराची, डेली द बोल पाकिस्तान कराची, डेली ताज़ा अखबार लाहौर, डेली अवामी मुतालबा लाहौर, डेली अदीब लाहौर, डेली रकम तराज लाहौर, डेली मिरर कोयटा, वीकली परदेस न्यूज़। ऑन वेब डेली दुनिया न्यूज़.tv, लाहौर न्यूज़.tv, urdu.com, tarkeenewatan.com, urdu.lahoremirror.com. Once again, thanks to all of these newspapers. Yeah, so here I would also like to personally thank all these 60 plus newspapers and web blogs who mentioned our first international online conference on their platforms. So really thankful to them, and we are really looking forward to enhance this voice of media diplomacy and media tech. Now we move forward to our next panel discussion titled The Power of Storytelling in Cultural Diplomacy. The session will shed light on how storytelling serves as a powerful tool to bridge cultural divides, foster mutual understanding, and promote peace and unity on a global scale. This panel is being moderated by Mr. Majid Qadri, the Chief Operating Officer of 𝐶𝐻 Technologies. Get ready for an inspiring conversation with our experts, panelists, who will share their perspectives and experiences on this vital topic. Mr. Majid Qadri, the mic is hand over to you. Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम माजिद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा किसी और को देना। ठीक। Guys, can you hear Majid? Please let us know. No, I can hear you. Okay, okay. So आप continue करें फिर। जी अस्सलाम वालेकुम everyone. वालेकुम सलाम. जी, my name is Majid Qadri, COO of 𝐶 𝐻 Technologies, and I have the privilege of moderating this insightful discussion as a part of the second international online conference on current landscape of media diplomacy. Storytelling has been a universal tool for connecting people, transcending borders, and fostering cultural understanding. In today's world, it plays a pivotal role in cultural diplomacy by shaping narratives, building trust, and bridging divides. Joining me on this distinguished panel are experts from diverse fields, each bringing unique insights. 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭, founder 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭 Solutions. 𝐿𝐴uranzeb Sohrawardy, diversity and inclusion consultant. Sylvester Joseph, founder and CEO, 𝐂𝐚𝐧𝐿 IT Products and Services. Hasnain Irshad Bhatti, operator Provincial Assembly of the Punjab. Saif Hyderabad, COO, Expert Flow Technologies. Dr. Wasim Ahmed, AI/ML expert. And the last but not the least, Mr. Professor M.A. Rafraf, CEO, Rafraf Associate and General Manager Development, RMG Insurance. Through this conversation, we will explore how storytelling can influence global narratives, promote cultural exchange, and reshape the future of diplomacy.
Hello everyone. जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी जी सर First question from all the panelists. How can storytelling be used as a tool for cultural diplomacy to promote peace and mutual understanding between nations? Everyone can answer. Yeah, I think Sayaf has a good experience over this topic. So Sayaf, if you can go first, please. Yeah, sure. Thank you, Shahrukh, for putting the mic into me and starting this conversation. I'm very glad and very humble to answer this key topic that is actually a very unique and important topic to be addressed through this channel. Actually, the media diplomacy is a key factor. Actually, the what I understand in my experiences and global traveling is that if you want to tell the community about our culture, norms, our country, so transcending the language, actually, the storytelling is the most important and the key point, which should be very precise. And the community and the nation should understand how you can tell anyone about what you want to say about your country, what you want to say about the nation. Actually, you are representing the whole community through your words. So storytelling actually demonstrate the key phenomenal aspect that everything should be in line through your words, through your perception, and how you can forecast or frustrate that what the nation is doing. So this is the, I think so, the brief initial uh, opening of the talk that how important storytelling is to be for the current scenarios and how the media should adopt these things while keep it in mind that we are going to be represent the whole nation in front of the whole world. So I think so. This is the starting point, and I will be going glad to answer any aspects and any key points which are coming during the discussions. Please. Thank you very much, Sayaf, for a very quick answer, very quick and short and crisp answer. And that's what I expect from the tech industry. So we are really, clear and crisp about the kind of responses we have. So here I have an announcement to make. We are joined by our chief guest for the day one, Mr. Ammar Jafri Sahab. He's with us. Mr. Ammar Jafri is former DG FIA, and now he is serving as founder of VN Pakistan 2030. So we welcome Ammar Jafri Saab in this international online conference about the current landscape of media diplomacy. And within this panel, we are going to invite him to not only share his views about the media diplomacy, but also to talk to our esteemed panelist. So, sir, we have Sayaf Haider with us, who is an IT expert. We have Mr. Aurangzeb Soharwardi, who is not only a tech expert, but a brand consultant as well. And we have Ms. Nozebele Sagwani from South Africa with us. So all these panelists are here to welcome you. So we are really looking forward to hear from you about your take on media diplomacy, because you have a very diverse experience and a very, good portfolio whenever it comes to such initiatives. So floor is yours, sir. Am I supposed to speak or you're okay? Fine. Yes, Thank you. yes, Thank you sir. very much. I thought that you are asking somebody else. Right, ji, thank you very much for inviting me here. And let's first discuss what is digital diplomacy. I think diplomacy is a profession which is 1,000 years old. We had diplomats, right? So even in the Mughal Empire period, there were diplomats, and the diplomats used to come from different locations, and the king used to meet them also. So on the same analogy, we have got now our foreign office, which is dealing with the diplomacy in the world, right? I think in the previous days, that diplomacy was like there was an ambassador from both countries, and there were some organizations in different countries.
But now the time has come when we should talk about detailed diplomacy. What is detailed diplomacy? Detailed diplomacy is a new way of communicating between two countries, in which not only the governments communicate, but the civil society also communicate. The organizations also communicate. The person-to-person engagements is always there. But this is only possible when we have a working relationship with the other country also, right? So if we talk about digital diplomacy, we need to understand that what are the prime areas where we should today, when we are talking today, we should talk about digital diplomacy. I think now there's a era of transformation, digital transformation. We are talking about CPAC, we are talking about BRI, we are talking about Global South, we are talking about SEO, we are talking about so many things, right? So this is not possible with the traditional foreign office arrangements. Reason, because the bureaucracy takes a lot of time to understand things. When due to emerging technologies, things are changing with a very rapid speed, right? Just take an example of cybersecurity. If we rely on the traditional way of communicating with the different countries, I think this will be a futile effort because cyber criminals work around the clock, wherever our traditional officers works only for 9 to 5. So this is the issue, and now how we can do it? I think the best way to do it to talk to each other, right? For example, let me tell you about myself. Recently, I have been selected as the member of the Specialized Committee on Artificial Intelligence by Government of China, right? And I was there only 2 weeks before. So what is the endeavor? The effort is to link people to people, organizations to organizations between China and Pakistan on artificial intelligence. So there are a number of domains on which we can talk about digital diplomacy. For example, SDGs, Sustainable Development Goals. Right now, we are lagging behind as a country in number of sustainable development goals. And I'm very clear about it that if we continue to pursue the way we are doing it now, I think we are heading toward a big trouble. Because to my understanding, by 2030, world will be divided into two parts. One is the countries who will go further, and other is the countries who will either stay back there or go back. Unluckily, today I am seeing my motherland not in a comfortable position. So there are few areas like cybersecurity, like emerging technologies, like artificial intelligence, like sustainable development goals, in which the detailed diplomacy should immediately come. And for that, we have to take into account the Foreign Office, we have taken into account the relevant organizations in Pakistan, and all public and private sector organizations. And lastly, I would like to cover the academic part of it. Globally, universities are now working within different countries. For example, I think more than 30,000 students are right now studying in China. So I think the best way is to engage our students with the not-for-profit organization, with the think tank, with the technology partners in other countries, and that is only possible if we have a policy, if we have a plan. There's the old saying that if you don't plan, you plan to fail. So unluckily, all of you are youth, young people. It's my responsibility to guide all of you that right now we are planning to fail. So we should not do it as a country. All of us should work and motivate people. There's nothing worry about, because Pakistan is a full of potentials, and the best potential we have is the youth. 64% population of Pakistan is below 30 years of age. I think there are only few countries who have this gift of God. I think we should work on it. I thank you all for giving me the opportunity. If you have any question, I can answer you. Thank you very much for sharing your vision with all of us. And yes, if you can stay for some more minutes, so we will be asking you question because we were asking these questions to our esteemed panelists, and you joined within our panel, so we gave the floor to you. And the No questions we issues. were asking No about. issues. No issues.
Yes, so the questions we are asking our panelists are mostly about media diplomacy and how we can use different tools different cultural tools to enhance this media diplomacy. So, Mr. Majid, if you can ask the question to Aurangzeb or Wadi Saab first, so then we can, go by one to other panelists. As a diversity and inclusion consultant, how can storytelling contribute to breaking stereotypes and fostering mutual respect across cultures? Mr. Aurangzeb Saharwadi, please answer. Ji, thank you very much for giving me this opportunity. This media diplomacy nowadays has got significant importance, and especially after the advent of social media, the mainstream media, it picks so many aspects, and then it can be very, very helpful for creating soft image, smoothing the diplomatic paths. In that, one of the most important thing is storytelling in diplomacy. It can be cultural, it can be narrative building. So media has a very, very important chunk in the form of storytelling to propagate, to spread, uh, highlighting various aspects, including culture, traditions, sports activities, geography, tourism. For all the topics, it is very, very essential to build a story which has an attraction for the other uh, countries' people to have a very, very interesting view. Diversity and inclusion is a very, very important area in which the storytelling can be based by the media or by the diplomatic channels, highlighting the diverse nature of natural resources and human resources. So, we are among those countries where there is language diversity, there is definitely the gender diversity, but other than that, many ethnicities, many cultural aspects can be highlighted through diversity and inclusion management. But for that, nowadays, as our chief guest said, that we are not sailing very smoothly. So this is a very, very troubled time to create motivating stories to present in front of the world, because most of the time the stories which are being portrayed by our for because of our country or the situation in our country, they are not very positive. So this is the challenging time for media, especially, to facilitate diplomacy through creating stories in this testing time. And definitely, more is the risk, more is the return. So these stories which are presented in these testing times can be more fruitful, can be more attractive. For that, definitely, the creation of protagonist characters, the creation of various bondings is also very important. It's a very specialized area. Media should definitely focus on it. And in spite of having many pressures and many blank areas or gray areas, this area should also be looked into it. And diversity has lot of potential in our country for making different stories, creating positivity, and highlighting various positive effects, positive aspects of our culture and our country. So it's very important. Thank you. Very good response from your side, sir. Thank you very much. Next question I have for Professor M.A. Rafraf. Sir, do you hear me? Professor Rafraf, do you hear me, sir?
as our chief guest, Professor Amar Jafri Sahab, please answer. In your experience, what makes storytelling a powerful tool for fostering collaboration and building trust in international relations? Okay. Okay, Ms. Nazi, can you confirm? Do you guys hear us? Yes. Also, They are, I think, not Yes, I can available. hear you. okay, yes. So Ms. Noze is here. Okay, so Ms. Noze, first of all, welcome to this international conference. And I think you have heard the question that Mr. Majid has just asked, that how storytelling can play a pivotal role in media diplomacy across the border. So we would really love to hear from your side. So Ms. Noze has joined us all the way from South Africa, and she's a very cooperative person. Whenever we take some initiative, she's the person who takes a very good interest in Thank it. you so Yeah, so the floor is yours. We are really looking forward to hear from you about this topic. Thank you so much, Sharu. I'm not going to have my video on because I'm in a very noisy place. Thank you so much for this opportunity and to be in this conference for the second international conference on current landscape of media diplomacy. Really, really, truly, the power of storytelling has been going from generations to generation, and that is what has actually accentuated what the foundations of even the world were in the beginning of time, because people kept on telling the stories from one generation to the next. Truly, the power of storytelling, especially the experiences of each and every single individual, is very, very important and key. And I think when it comes to media diplomacy, it is important to go back to our roots where we are able to tell each story, which include various uses of the media by officials and mediators to promote negotiations and conflict resolutions and any other topic that is needed to be disseminated in terms of information. This communication based diplomatic processes and affairs, such as media events, is the proper context that we should be coming around and putting these policies that the ambassador is talking about, so that we are marching forward in an army-based manner where we all know what those policies are and where we are going in terms of media policy. There's also the social media diplomacy that we must always take into account. This serves as a potent tool for projecting soft power, enabling nations to showcase their culture, their values and ideals to a global audience. And I think we've got an example of the Global Women's Development Network, which started in 2021 with just 15 countries. Now we are over 110 countries, and we are able to, we've connected so well with those women. It's as if like if you're talking about Madam Khan, for example, is someone that you know very well through the trust that has been established and built by these women in over 110 countries over the past 3 years. It's been an honor, because even for me, I'm here in this platform today because of being in that network of women. And let us really, really use this next step or next phase of having the media part of what is it that is in this policy document, what is it that is needed to be explained through these foreign policy structures. I really liked from the first panel, the speaker was saying, we really need to change things and do things anew. It has to be done in a different way than before. And what people are looking for, especially after the period of COVID, people have gone more inward. We're not having more mass gatherings anymore. Now, how do we use that platform to speak the right communication in terms of social media platforms? We've seen lots of women gathering with the International Women's Conference that happens every single March of the year. Over 55 countries are present, and people are really, really coming into those networks. And the more we bring in that media diplomacy of what is it that we're portraying, and the world needs more positivity. The world needs more unity, needs more peace, even in those small areas or in those smaller impacts. For me, to you guys as the panel and to the rest of the people who are listening, what is the next step to make sure that these policies are in place, to make sure that
this diplomacy is taken to the next level. I'm really sorry, I'm in a noisy area because my network at home is just not working because we've got a very bad weather here in this side of South Africa. But I'm still here in part of this panel. That is my comment for now. Thank you so much. Yeah, thank you very much, Ms. Nazabelli. And we are enjoying the background music. So again, the music is also a part of cultural diplomacy. So we really like it. So it's very good. So we didn't had any music in our conference, but your talk, covered that aspect as well. So thank you very much for joining us. Nazi, nowadays our cricket team is there, so please go and enjoy the matches and promote cricket diplomacy. Yeah, exactly. Rightly said by Aurangzeb Saab. And yeah, please take a good I will care. definitely do that. Always just send me a link of what you want me to promote, and I will definitely do that. Trust you me. Even cricket as a sport, we will do that. Thank you. Thank you very much. Okay, so yeah, so we will move forward with questions for our panel. So we also have Sylvester Joseph with us. We recently got joined by Professor Dr. Sajjad Paracha. So we are really looking forward to listen from Dr. Sajjad Paracha in his respective panel. So over to Majid again. Hi, Sylvester Joseph. Do you hear me? Yes, how are you, sir? Alhamdulillah. Achha. Now I have a question for you. From a business perspective, how can technology enhance the impact of storytelling in promoting cultural diplomacy? So welcome to all of you. I'm really thankful to Sir Hamid and the team of Sharukh's Technology for having a second international conference on this topic. So as all the guests and all the panelists have said about the media diplomacy for the different perspective. So we are in the age of digital era, so everything is going to change. Like in media diplomacy, what I think, the more the stories, as in the past, like I belong to the from different community, and from some people from different community. So story like make that impact on us, so we can collaborate with each other. Like religious perspective, the stories are taught from the ages, and we have a different stories. We are surrounded by the different stories, so that is the very important in the religious perspective, as well as in the for creating the connection with the people. So from ages we are surrounded by the stories, and these stories have created impact till now. So in the business perspective, the main thing is how we communicate our story. Like we just creating an ad. So for this conference, we have like a different ideas for creating how we can interact with the people, how we can create an impact on. So we need a simple story to tell our audience that how can this international conference impact on individuals. So that is the main thing that we need to understand in the media diplomacy, how we are pitching our story to our consumer, our who is our customer. So that is very important. So like there are many ways we are using different technologies. I am from technology background, and like I have creating the different technologies and augmented reality. So now augmented reality, it will be more likely we can feel, we can interact with that story. So that will be more immersive and more engaging way to deal with the customer, with the person who is listening our story, our ads. So that will be the next we can do in it. So as ma'am noises said, what will be the next opportunities for us? So that will be the next opportunities, how we interact and how we engage our customer, how we communicate our messages to the customer. And the one more thing which I wanted to add, for the Pakistani perspective, like as we know, Indian Prime Minister, he tweets on his Twitter.
So he has the he has the main thing to do on the Twitter. So like our government on your platform, I just want to request our government to if they don't do if they have the plan to the different alternatives, so use that, but don't close that thing which is already running. So we should in media diplomacy, Twitter is the main thing and Facebook is the main thing, Instagram is the main thing. Media diplomacy is going to be the next thing. So we should we should have the alternatives, and we should implement which is already having, and new technologies will be the important for the media diplomacy storytelling. So if we go into the story, we have the immersion and we can feel that story, so it will be the next step in the media diplomacy. So that is the my answer. And for the business perspective also, the ads which we are watching and which we are having, so it will be also into that format, so it will be the more impactful than the which we are having now, right now. Thank you so much. Thank you so much, Sylvester, for a very quick response and very, comprehensive response. So, Sayaf Haider is also from the business community and the tech community. So I think he can better relate with what you were saying, that we do this media diplomacy primarily through social media. But if social media is shut down for any reason, we can't do anything. We can't handle that. But what we can do in our humble capacity, we are doing it. So Sayaf is doing it, Aurangzeb Saab is doing it, Charu Technologies is doing it. So I would like to ask Sayaf that what kind of particular initiatives we can take to, further educate our youth about the digital storytelling, because most of us are using social media quite carelessly and quite casually. But this is a very powerful tool where we can, tell our story, we can sell our story. So I would like to ask you about particularly the selling part of the story, because both of us, we have pitched to multiple platform and we have, secured investments and fundings. So how effectively we can, sell our story through digital media? Thanks, Amit. This is actually a very wonderful question. I use this platform to highlight actually the importance of the technology, especially in today's world, where cultural diplomacy is increasing influence by media, particularly the social media. You highlighted that. I would like to acknowledge and express my admiration for the Amar Saab as well for emphasizing the critical role of the cybersecurity actually in ensuring the secure and effective communication. And you also mentioned that it's a very important aspect that what we are fostering in front of the nation, and especially our young population who are using the social media platforms, should be aware of the fact that what they want to say in the public places and what they want to share about their personal experiences having a very important impact globally, and especially forecasting our nation and our culture norms as well. So we must ensure the responsible behavior when we are going to be in front of the social media platforms. And also, I mentioned about the technical landscape, having a background in the technology as well for a couple of years and running the businesses in that space. So I must pointed out the most important thing about is that we must leverage the virtual reality and other emerging technologies. We promote and showcase our culture to the world. Actually, this is a growing aspect. Earlier, the time is about 90s and early 2005 or 6 time when the social media platforms are emerging. Nowadays, we can use the virtual reality and such platforms who are emerging in forecasting the role of the media and the communication platforms in front of the audience. And secondly, you mentioned about the business aspects that if you're going to sell the things in front of any customers, how the storytelling impact your long-term relationships and closing the deal. Actually, all the things that's going around is all about is storytelling. It's all
I always said that it's all about the story you said to them. You gain the trust from your customers, the audience, the investors, the customers, anyone you want to sell your story actually give your business. So story is telling is like a key important thing, and I think so when you visited any of the business school like Oxford and any other schools, so there's a separate course area you have to be completed in your education and training time. Actually, the storytelling is one of the key important thing. They must uh, went you into that goal or the module, the storytelling, because this is what you actually forecasting about your business to the customer. If you tell anything, you must have to tell in a very reputable manner or in a very convincing manner. So I think so. Business is all around the storytelling. So there's no conflict. I think no one can conflict on these things. So this is norms. But I just want to highlight the importance of the technology in today's era. Just want to highlight about these things actually. Thank you, Sayaf, for rightly mentioning Please, all Mike. these things related to business. And whenever it comes to business and business consultancy, providing consultancy to startups, so we have a very esteemed panelist, Mr. 𝐂𝐮𝐬𝐷𝐿𝐴 with us, who can guide us better in this particular area. So I would like to ask you, sir, about how the storytelling can help us, not only to tell our story, but to sell our story. Yes, that's also very important. But the first step is telling the story properly. Then it can become very easy to sell. So there are various dimensions like personal story. One can project the hardships, the challenges faced, and then reaching some heights, achieving some goals. So, personal storytelling also creates an authentic image of the personality. It creates trust, it creates a sense of achievability. Second aspect can be the business stories, the projects completed up till now, the collaborators, the international partners with which someone has worked. And just like a case study, storytelling, like a movie or a drama, can also be created by identifying various characters. Like I previously said, that some protagonist hero can be created, and then achievements and projects completed and collaborators can be highlighted through a very very artistic way, informal way, not particularly being very professional, not particularly being very to the point. So it can definitely help, and then on that image the second step can be taken to sell it, to achieve your objectives, to acquire funding, to ask for collaborations. Then it has more value, more weightage. But for that, definitely one has to think about the visual storytelling. If you are using words, words should be very, very interesting and very catchy, uh, to the point, and focused on whatever you want to tell. So, the honesty which you put in, the articulativeness which you put in your story helps a lot. Most of the time, as you said, that most of the youngsters use social media very casually. You are very right, and I agree with you. You used very appropriate words, but things have gone beyond that. It is so disgusting, and to see what is going on. If you have to spend social media, it can be crafted, it can be enjoyable, but at the same time fruitful also, for as far as the awareness is concerned, the education of others is concerned. But storytelling can be very very useful tool. And definitely, if you give an authentic
and trustworthy version of your story, definitely like-minded people will connect. It may take some time, but it is not time dependent. It depends that at that particular time, once you are highlighting or propagating your story, who is interested? To make people interested is also an art. And if you watch different movies or dramas or art forms, one can learn from that, that how I make people interested in my story. Most of the time we keep on telling our narratives, we keep on using the jargons which we like, and they have very less or sometimes no effect on others. So the story should be so powerful, and definitely once you put in emotions in that, it carries more weightage. So it's a complete science, it's a complete craft one has to learn. And as you said, and I will also quote this, that it should be started from social media. Fun, enjoyment, casual approach can lead youngsters to very, very achievable and very concrete objectives. Thank you very much, sir, for yet and again comprehensive response. And with this, I will move towards the next question. That is bit different from what we are discussing right now. So it is mostly about the misrepresentation and underrepresentation when it comes to digital media. So I'll ask this question to Ms. Noze Sogoni, that how you deal with this kind of problems when a certain class or a certain segment of society is either misrepresented on digital media or underrepresented. So I'll quote an example that is more relevant to the Pakistani context. So Sayaf and Aurangzeb sir will enjoy it. So we have a neighboring country, and that country, India, has an industry called Bollywood. So whenever Muslims are shown in Bollywood movies, so this is another kind of creature, right? We don't see that kind of Muslims here in Pakistan or anywhere in the world, but they misrepresent the whole segment of society. So I think this is the case in multiple scenarios. Sylvester can shed some light on it. Because he is again, from minority community here in Pakistan, because such segments are mostly either misrepresented or underrepresented. So I would like to listen what is the scenario there in South Africa about this kind of problems. So Ms. Nozi, the mic is yours. Thank you so much, Saru Technologies, for this opportunity and this platform as well. When it comes to misrepresentation, especially in the media aspect, there's always a voice, or I would say behind the scenes, that a message that's been carried. And that message, unfortunately, still does not carry the woman's voice, the youth voice in it. And I don't want to seem like cliche, oh yeah, it's equality, but it's really the reality. Because even when it comes to business and corporate, we're only seeing 3% of women being represented in that atmosphere in terms of business sector. Even in the media spaces, the media houses are mostly done by males. And that communication of what is it that they want to put across will come from their own perspective. I still, and I always advocate, and I always talk about this muscle when it comes to women. Women must find themselves significant. There is an unbalance that has come, that we don't find ourselves should be in par. Yes, that must have been said over and over by a number of people from one generation to the next. But now, as women, now that we're here, what is it that we want to make ourselves significant on, so that we can be seen, we can be heard, so that there's representation? I always talk about branding yourself as women. Bring that significance in the things that you're doing. And I really, really like each and every single speaker in this panel who's been speaking about bringing that storytelling to the fore, bringing it into like that movie aspect of telling that story. Where has this person journeyed on? And I really, really hope we can put a proposal together as this panel to bring something to the fore that is great in terms of saying this is a story, and this story can be told. It can be bringing all these different aspects that he was talking about, the landscape, the history, maybe of Pakistan, but telling it to someone now who is in China.
and bringing that aspect, but bringing someone from outside totally to say this is the process of how one becomes a Pakistani, or you become the tourism that's involved, the different landscapes. You tell that story, but let it have that global view that we've got someone else who's in China who would want to see the story, and we bring that aspect. Now, then, what is it that we're bringing to the youth? I love the virtual aspect of it. If we're going to be talking to the youth, we have to use the social media platforms. But how long is it? How short is it? Because now they're not used to the educational part that is being brought in terms of the social media aspect into it. So yes, in terms of marginalization, we really need to see the forefront of women coming to the fore and bringing in this media diplomacy much more further. Yes, even in the South African aspect or landscape, that still needs to be done quite a lot, where we're bringing solutions to youth, but bringing women into the forefront of all these projects and solutions that are coming to the fore. Thank you so much for each and every single panel for really, really empowering us today on media diplomacy. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Nazi. And yes, especially whenever it comes to women and children also. So sometimes on our media, children are also very underrepresented because we don't have any particular shows and particular, kind of content for them. So when we grew up, we remember that a lot of cartoons, a lot of, movies for particularly designed for children used to be there, and we used to see the very inclusive content, inclusive in terms of gender, inclusive in terms of age, inclusive in terms of religion. But now we are seeing certain problems, and that is the right time to talk about all this and raise voice to increase the representation. So here I would like to ask Sylvester, so how you see this issue of underrepresentation, because when it comes to minority communities in Pakistan, so what I can say is it's not misrepresentation at least, but yes, there is definitely some underrepresentation. So how do you see it? Thank you so much, sir. The problem is that the presentation of the particular community and the particular gender and something else, so we should add them also in our conversation so they can talk their story, so it will be helpful for them to understand more deeply about that particular topic. So what the problem which we have in that particular area is that the representation of that person is missing at that point. So how can we relate? So as I don't want to talk in depth about the government policies and this type of things, but the government should and the media should also include that person who is having that thing. So for that domain or that perspective, so it will be more beneficial and more the story that comes more authentic, and it will be relatable to the all person who that belongs to that community, particular for that community. So as you said that in Indian movies the representation of the they miss interpret, and they just show the green hat, and they represent in that way. So that is not the representation of that particular thing. So if they include that person who is belonging to that community, they can have that particular answer of the representation of that whole community. So it is very important for the government, for the filmmakers, for the media diplomacy to include that person as well. So that is my answer. But in Pakistan, I think so the representation of the minorities is highlighted, but it is misinterpreted in my point of view. So that is the reason why, because we are not included in that topics, in that side of the story. So that is the main reason of it. Thank you so much. Yeah, thank you, Sylvester, for highlighting it. This is, very important to highlight these kind of things, because whenever you are taking an initiative, so while taking the media initiative, we, undermine few things, but while taking the media tech initiative, we have a chance to, correct our mistakes and not repeat those mistakes over and over again. So
I saw the comment from Aurangzeb Sorwadi Saab, sir. You want to say something? Please go ahead. Hamid, I just want to add 2 points. Sure. The one misrepresentation by the Bollywood movies, which you said. So there is another side of diplomacy also, in which you use all sorts of diplomacy techniques to undermine your whatever, not using the word enemy, the people, the countries to whom you don't like. So they are not doing it because of ignorance, they are doing it purposely. So that is the grayish side of this diplomacy. Second reason, we are very weak in cinema, we are very weak in art to represent nationally, internationally. That's why they have an added advantage. uh, we make about 2 3 movies after 1 2 3 years, and that too on comedy and romance and all that. So they have a very very strong a segment of movie making, and they have captured the whole world by telling their side of the story, and they are very successful. Second point which the speaker brought, that's what my specialization, that is diversity, is made for, and particularly the inclusion. The more inclusive society we will become, the more voices, the more positivity, different shades of different stories will come, and that will give us an holistic view of the society as a nation. And internationally also, we will not be specific to some segments or very confined elements. We can give our whole complete big picture, in which all sorts of representation of religion, ethnicity, genders can be included, and that will be more potent and more strong message to deliver through storytelling, through media. Thank you. Yeah, thank you, sir. Absolutely right. And yeah, when you said that they are doing it purposefully, yes, you are absolutely right. Because diplomacy is always between two parties, two agencies who are trying to be on same point. So it is, inheritedly given that they are already not on the same point. So whenever we are doing diplomacy, we need to, be very aware that these two parties are not in good terms, or even if they are in good terms, they'd want to make these terms more good, right? So there are certain initiatives that are being taken to develop diplomatic relations between these two particular countries. But as we are talking in the international sphere, so in that international sphere, these two countries of subcontinent are very small part of it, although they are very big in numbers whenever it comes to population and GDPs. But still, when you talk about the whole world, so these two countries are not the entire world. So we have, a lot of other countries. So again, going back to the international perspective of this storytelling, I'll be asking the last question, the final question, one by one to all panelists, but I'll go first to Ms. Nozabele once again. So I would like to ask her that what are some, tools and tips and final sort of recommendation you would like to give particularly to women, how they can increase their representation through storytelling. Because whenever I listen this word of storytelling, I personally believe that there is no more good storyteller than a woman. So how do you see it? Thank you so much. I laugh at the part that says there's no more good storytellers. I think there are. We just need that platform to be creating more of those stories. You know, one, I was hearing that in Pakistan we're having less and less movies, and you'd have them maybe even in 3 years time. Bringing those sort of like awareness campaigns. We can even do those digitally and bring the relevant people who can say, this is how you do storytelling, because people can take that part out of you in terms of saying I'm a good storyteller. One, for me, I've always wanted the right tools, the right resources to be in place before telling the right story. Not that the stories are not there, but you really need to be connected to the right people, the right resources, to be able to say, already just by me being in this platform, I know that I would love to have a diplomacy video that would showcase Pakistan to the rest of the world. But someone who's not from Pakistan, even myself, coming to say what is happening, or having a tour
of the area there, and then showcasing that to the world. There's so many things that can come up right now, but for me, bringing that awareness much more greater and uplifting it would be number one. The key is to telling the stories that are already there that maybe people haven't had. I've had so many proposals that I've had as well myself in terms of various stories that I want to tell. Because as a storyteller, I think from birth to death, there are different informational gaps that people would want to say and share to different people and to different or the client or the customer that you're talking to at the end. There are really, really vast opportunities. And for me, having networks and the right platforms where we can say, this is the proposal, this is the funding, this is where we can take the story to, would really, really be great, because there are really great stories that one could tell and that we could generate from even other people as they find their purposes in this life. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Noze, for such a comprehensive response. And I'll quickly jump towards the next panelist, Sayaf Haider and Mr. Aurangzeb, that how you guys see what we can do to improve the storytelling, particularly for the misrepresented and underrepresented areas of like minorities and children, and for women for that matter. So I'll quickly ask Aurangzeb Sahab first, and then we will move towards Sayaf, and then Sylvester. Hamid, first of all, as far as the diplomacy is concerned, the government level should be activated, uh, because without the support and infrastructure and certain other involvements of the government, fully it's not possible. So at government level, there should be a conscious effort to promote storytelling for the national consumption also and for international consumption also. There are institutes where storytelling courses or storytelling techniques can be taught. There are platforms where this can be propagated more, supported more. But we cannot depend on government only, because government has its own responsibilities and problems. So I always request individuals and social groups to have their say, like you have created this wonderful platform. They can also jointly or individually, personally or collectively use this. Social media also, such conferences also, there are so many seminars and all. But before that, they have to build something valuable, which Nazi has said, that it's very important to be at the right place with the right amount of techniques and resources, and then to tell your story. So my urge is that till the time government does something very concrete or conscious, people like you or the groups should take this initiative to include all groups, minorities and ethnicities, genders, and create social media platforms or individual platforms. As after Corona, it was said by Nazi that mass gatherings are missing and people are confined to their own shells and silos. So this can be done simultaneously, but the individual effort is very important, like yours, to create such platforms, to share stories and have good relations with individuals first and then with the countries. And media people should also be invited more in such type of conferences and on the spot conferences, to make them aware, because media people are also not very trained or not very conscious about storytelling and diplomacy and all that. So I think this multi-pronged effort should be there, and it will have definitely better results. Thank you very much, sir, for this amazing response. And with this, I would like to add something here. As all of us, most of us are founder of something. We are creating something out of nowhere. So for that matter, and to engage with the storytelling thing, Sharu Technologies is taking an initiative named Bani Kahani. Right, so here we are celebrating the stories of founders who are here with us on this journey of impact. So I'll quickly show this a very short, a few second video of Bani Kahani. So this is just the logo unreveal of Bani Kahani. That means founder stories. So we are, coming with this
group series of Bani Kahani, where we are celebrating the founders who are working tirelessly, making a lot of efforts to, do the good in this society. So Sayaf, just before you share your final response, I wanted to show this about the Bani Kahani, and I would also like to share something related to the team that made all this possible. Because when we talk about Bani Kahani, so it is very important to uh, appreciate the founders who do this. So I'll ask you to continue with your response about this media diplomacy thing, about the misrepresented and underrepresented. And while you will be talking, it will be behind the screen. People will be able to see it in the backdrop. So I would like to ask you to kindly continue with your answer, and meanwhile we can see it in the backdrop. So Hamid, just want to confirm, should I Yes, start please. it? Yes, please. Yeah, so, okay. Firstly, I would like to acknowledge the response that our experts have mentioned in the conversation is about the role of the government and especially the agencies who are empowering the women and children to tell the role and impact in the community. So it's a very important that the government should take the initiatives and the government should be the part of that journey to educate the nation about how you can sell, how you can like storytelling in front of the peoples. So actually, storytelling is not about just sharing your vision. Actually, you can like actually empowering them that you are not alone. Your voice are heard and your struggles are understood and their dreams are realized. Actually, you power the women's and children's the narrative that you have a very important role in the community. Actually, you encourage them to be part of that initiative. So storytelling actually changes their lives and the words around them. So if you can motivate them and if they communicate with them in a very right manners, so there's a very strong tool and it impacts us a lot in the community and you are actually motivating them to be the part of that growth initiatives that you take it and yes, I totally agree with them that this should be possible with the involvement of the NGOs and the government support. Without that, it's a very hard and difficult journey to be concluded. Thank you very much, Saf. And I would also like to ask you about Bani Kahani that I just showed you. What do you think about such kind of initiative? Because when we talk about minorities and such segments, so we as founders are also a kind of minority, right? So how do you see that founders coming together to help each other? Yes, very true, Hamid. I totally agreed with that. The founders are like minorities in the business of Pakistan, but it's growing. No, now the business landscape is changing. People and the industry should have a understanding about the startup ecosystem and especially the emerging startups who are being the part of the great initiatives of the country. And these small initiatives actually empower the nation with the technical support and you see that this is a long-term building block for the young population to be part of the community development and you can say the economy growth. So now the government and the business community realize the impact. But this is very true. We should have been the part of that initiative. We should have to share our journey, our stories to others, founders, how we can evolve with the passage of time. What are the experiences? What are the mistakes that we did in the past, and how we are going to be a very impactful startup and the founders of that startup being a very important key role part in the community. So I think so this is very true that we should have to share our stories to them.
this is like a brilliant idea, and I totally in that part of that story, kahani, Pari Kahani's part. Sure. Thank you very much, Sayaf. And finally, we are moving towards the conclusion of day one. Alhamdulillah, we concluded it really well. So thanks to Almighty Allah. And I would request Sir Aurangzeb Soharwardi to kindly say some concluding remarks about this panel discussion. And then Mr. Majid will say some concluding remarks about day one. Thank you very much, Amit. First of all, lot of appreciation for you for arranging this conference and event, and then a lot of regards and appreciation for all the panelists. They were really very focused, spoke their heart out, and thank you, Nazi, also that she was very practical in her comments. Thirdly, like I said, that the support of the government is very important in the world because it facilitates, it paves so many ways. But till the time that support is there or not, the individual and social groups must continue this storytelling in business, especially as Sayaf Saab was talking, that we need more founders, we need more businesses, more startups. For that, storytelling can be very useful tool in creating a buzzword, in creating a trust environment, in creating authenticity. So again, a lot of thanks from my side, and appreciation for you, Ahmed. Thank you very much. Thank you very much, sir. A bundle of thanks. And to conclude this panel, I'll hand over the mic to Mr. Majid so he can conclude the panel. Thank you to our panelists for their valuable insights on storytelling's role in cultural diplomacy. Let's continue using stories to build bridges and foster global understanding. Thank you all for joining. Thank you so much. From my side, a heartfelt thank you to all the esteemed panelists and our fantastic moderator, Mr. Majid, for panel 2. Now, as we conclude day one of our second international online conference on the current landscape of media diplomacy, I would like to extend my heartfelt gratitude to all of our speakers, panelists, and participants for their invaluable contributions today. We have had an engaging discussions on how media functions as a diplomatic tool in global relations and explored the transformative power of storytelling in cultural diplomacy. Your insights, questions, and active participation have truly enriched the conversations. A special thanks to our moderators and panelists for guiding us through these thought-provoking sessions. I also extend our appreciation to the media partner who helped amplify our messages to a wider audience. As we wrap up today, we look forward to continuing our journey tomorrow with more enlightening discussions. I encourage you all to reflect on the ideas shared today and join us again tomorrow as we dive deeper into the evolving role of media in diplomacy. Thank you all once again for being a part of this event. Have a wonderful evening, and we look forward to seeing you tomorrow. Thank you very much, everyone, for joining us on day one of this international conference on current landscape of media diplomacy. My special thanks to all the people who stayed for these 3 long hours, especially Rashid Saab, who stayed for all these 3 long hours and who also connected us with our chief guest, Sir Ammar Jafri. So a special thanks to Sir Ammar Jafri for being a chief guest in this conference. We are really thankful to you for your time and for your precious words. I'm really thankful to Ms. Nosebele Sagoni from joining us all the way from South Africa. And I believe that it was not easy for her because we could listen the background music, although the music was good. So thank you very much, Ms. Nosebele. Thank you very much, everyone. Thank you very much, Professor Iftikhar Rasool Sheikh Saab, who is personally with us here at 𝐶 Technologies office for staying this long with us. And we are really looking forward to hear more from him. So his contribution in panel 1 was really amazing.
Thank you very much, Majid Qadri, for moderating panel 2, Ishtiaq Qadri for presenting 𝐂𝐿 and Peace by Sylvester Joseph for being a part of panel 2. And also, I'm very thankful to Professor Dr. Sajjad Paracha Sahab, who joined us 2 days before his panel because he wanted to know more about the conference and the context he's going to talk about. So that's, the way of a true academic and true researcher who actually take interest on whatever is happening. Thank you very much, everyone. Thank you very much, Team Sharu Technologies, the organizing team behind it. Ms. Zaida Qadri is here, Ms. Ali is here. Thank you very much for your contribution. So with this, we are concluding over day 1 and really looking forward to see you all again on day 2, that is tomorrow. So join us tomorrow again for more insightful discussions about the current landscape of media diplomacy. Take a good care of yourself. Bye-bye.